हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउ टू पाकिस्तान 2024। मेरे साथ मुशर्रफ जैदी आए हुए हैं और मैं हूं आपका मेजबान फसी जका। कैसे हैं मुशर्रफ साहब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आई थिंक रिकॉर्डिंग से पहले हम यही कह रहे थे कि नई सीरीज लॉन्च हुई है न्यू जनरेशन के लिए, हाउ टू पाकिस्तान। तो मैं वी जैसी मोर्फ इनटू उजैर बोथ ऑफ देम। जैसी उजैर आए जूम कॉल में, मैंने इनकी दाढ़ी सफेद होते हुए देखी, फिर मैंने अपनी दाढ़ी देखी। आई थॉट कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ना, इस पे कमेंट करना इतना मुश्किल काम है, दैट स्लोली वी वॉर्फ्ड इनटू मुशर्रफ जैदी एंड फसी जका। एग्जैक्टली। बल्कि कल मैं वो क्या कहते हैं, तो अली गुल पीर और अकबर और की पॉडकास्ट है ना, ट्रिपल हाँ, ट्रबल पॉडकास्ट, उस हाँ। पे वो भी ये बात कर रहे थे कि अब हम अंकल्स के जोन में दाखिल हो गए हैं अपनी जिंदगी के। यार ये तो पॉडकास्ट में गलत चीज याद दिला दी कि अब जो है वो इन दैट अंकल फेज और एंटरिंग दैट अंकल फेज नाउ। यार शौक में आप चले जाते हो ना, कभी कभी आपको जब पता चलता है कि आप कितने अंकल हो। मैं उस दिन रोड पे चल रहा था, एक बॉल आई, किसी ने बोला अंकल बॉल, मैं इग्नोर किया, बोलता ओए फवाद चौधरी। मैं बोला अबे, बच्चे मुझे फवाद चौधरी बोल रहे हैं भाई। आई थिंक एट दिस पॉइंट वी शुड एक्सेप्ट के जवानी तो जा चुकी है। उजैर यूनस बड़े टाइम के बाद वापस आए हैं, इनको हमने बुलाया है पाकिस्तान नहीं डिस्कस करने के लिए। ओ कैन यू सी बाय द डो। उजैर आपको तो आता होगा। थोड़ा बहुत आता क्यों आपको है। वो नेचुरलाइजेशन साथ के लिए करना नहीं पड़ता, सुनाना नहीं पड़ता? सुनाना, यू हैव टू टेक अ ओथ एंथम, डोंट दे यू हैव डोंट सम हैव टू क्वेश्चंस सिंग। आल्सो दैट यू नीड टू नो द आंसर्स टू? You have to know the answers to questions like कितने senators होते हैं, senator की term कितनी होती है, तीन rivers के नाम बताओ। It's a very basic test. नहीं पता और oath होता पाकिस्तान। है, you have to pledge allegiance to the constitution, so that you have to do। तो उसके आप बगैर तो नहीं यानी मिलता। मान रहे हैं कि आप, आपकी एलिजेंसेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को हैं? हाँ भाई, अमेरिकी सिटीजन हूँ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज एन अमेरिकन पाकिस्तानी, तो नो नो शेम व्हाट्सोएवर इन दैट। तो जी, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट तो मशहूर है कि नाश्ता भी मैं इमरान खान का नाम लेके करता हूँ, तो नाश्ता शुरू करते हैं कि अमेरिकन इलेक्शंस के जो इम्प्लीकेशंस हैं। पहले, ये जो एक आइडिया है कि ट्रम्प आ जाएगा तो फिर खान बाहर है, इस आइडिया पे आप क्या राय देना चाहेंगे? शायद अभी आई डॉन के लिए भी मैंने लिखा था इम्प्लिकेशंस क्या हैं इलेक्शन की पाकिस्तान के लिए। तो ट्रम्प से अगर हम स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली कुछ लोगों का, काफ़ी लोगों का डायस्पोरा में इन पर्टिकुलर मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर तहरीक इंसाफ या मिस्टर खान, लेकिन पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो बाइडन ने, बल्कि पाक पैक जो कि क्लेम करती है रिप्रेजेंट करने को पॉलिटिकली पाकिस्तानी अमेरिकन को, कहती है कि जो बाइडन ने लेजिस्लेटिव कू करवाया और उसकी वजह से खान साहब उसके बाद से जेल में हैं, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट नहीं की जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो उनका तो ओवरटली मानना है, उन्होंने पब्लिकली स्टेट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खान साहब को रिहा करवाने में और पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं आई डोंट अग्री विद दैट, और उसकी बेसिक सी वजह यह है कि नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप का ना तो कोई दीन ईमान है। नंबर टू, फंडामेंटली फ्रॉम अ वैल्यूज बेस्ड परस्पेक्टिव वो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में बिलीव नहीं करता, कभी नहीं किया। हिस्ट्री पूरी एक मौजूद है, फॉरगेट अबाउट 2016 ऑनवर्ड्स, इवन उससे पहले की। और नंबर थ्री, कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, उस पर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन एक बहुत स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके साथ साथ एक इकोसिस्टम है जिसके पर्सपेक्टिव से पॉलिसी बनाई जाती है। और अगर हम उस पर्सपेक्टिव को देखें जो अंडरपिन करता है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को, तो उसमें मिलिट्री का रोल और मिलिट्री के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सेंट्रल है, रही है हमेशा से, और इस वक्त और भी ज़्यादा सेंट्रल है क्योंकि बाकी चीज़ें तो अब कम हो गई हैं इंपॉर्टेंस में। तो व्हेन यू लुक एट दैट, डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली, इफ ही इज इलेक्टेड, मेरा मानना ये है कि एक्चुअली इन रियलिटी ही वुड बी अ लॉट वर्स फॉर पाकिस्तान देन अ फ्यूचर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जरा अनपैक करते हैं, पर अगर पीटीआई के परस्पेक्टिव से मैं थोड़ा पुशबैक करूं आपको, कि भाई
डोनाल्ड ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इट्स नॉट लाइक ही विल एक्टिवली वांट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बट ही विल नॉट गिव अ, उनको शायद स्टॉर्मी डैनियल्स इमरान खान में फर्क भी ना पता हो। तो वो जो एक आइडिया है कि एक एक्टिव पुष्ट पनाही हो रही है करंट गवर्नमेंट की और करंट एस्टेब्लिशमेंट की, और उनको प्रॉपर ही पीछे से अमेरिका सपोर्ट करता है। जब वो सपोर्ट एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा, दे लुक द अदर वे, द पॉलिसी विल बी अमेरिका फर्स्ट, दे विल नॉट गिव अप अबाउट Pakistan. Then PTI, off the back of their lobbying, off the back of everything that they've done over the past few years in terms of getting senators and Republicans on board, uski basis pe they will be able to get what they want without necessarily Donald Trump facilitating it. अच्छा, इस पे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन, बिकॉज अगेन जो लेटर्स इशू हुए हैं अभी रिसेंटली, को आई थिंक 60 सिग्नेचर्स थे या 50 के आसपास, मे बी गेटिंग द नंबर रॉन्ग। और जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर आप कलेक्ट करें डेटा और डेटा रिव्यू करें, तो मेजॉरिटी जो सिग्नेटोरीज हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स नहीं हैं। नंबर एक, तो ये मानना कि रिपब्लिकन्स किसी तरह सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो जब आप डेटा देखते हैं और कहते हैं कि कौन ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और इस लॉबिंग एफर्ट के नतीजे में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है पाकिस्तान में, और खान साहब की अरेस्ट के बारे में आवाज़ उठाता है, दोज आर पीपल लाइक कांग्रेसमैन रोखन्ना, कांग्रेसवुमन इल्हान ओमार, एटसेट्रा। दीज आर ऑल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स। वो इल्हान उमर तो एक अच्छी औरत है, उन्होंने अच्छी वजह से कर दिया होगा, बट पीपल लाइक ब्रैड शर्मन जो आईपैक से भी वो भी पैसे लेके, डेमोक्रेट है। तो वो जो पैक्स बनाए हुए हैं जिस तरह पाक पैक है, वो जो लॉबिंग से पैसे लेकर साइन कर रहे हैं, या कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो वाजंट अ रेजोल्यूशन, व्हाटएवर इट वाज, जो डॉक्यूमेंट इट उन्होंने वाज अ पास करवाया था, रेजोल्यूशन। इट वाज अ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। थी। तो वो रेजोल्यूशन। वो पैसे लेके कर रहे हैं, तो लॉबिंग में हुएवर वाज अवेलेबल, इट्स लॉबिंग तो उस तरह से सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड टू विच पार्टी, राइट? करेक्ट, और उसके अंदर भी लॉबिंग के थ्रू, और क्योंकि इलेक्शन सीजन है तो द हर्डल टू क्रॉस इज लोअर, राइट, क्योंकि उन्होंने भी फंड रेजिंग करनी है, हम्म। आप कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अगर आपको इतना क्लोज इलेक्शन है कि एवरी वोट मैटर्स, राइट, तो आप इंगेज करेंगे कंस्टिट्यूएंसी से। प्लस जो रेजोल्यूशन की हम बात करें फॉर एग्जांपल, या लेटर्स की भी बात करें, तो वो जो कांग्रेस पर्सन है या सेनेटर है और उसकी जो टीम है, वो इतना पुशबैक इस इशू पे नहीं करेंगे कि जी अच्छा ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसमें मतलब क्या कॉस्ट है, राइट, स्पेशली इफ हम्म। योर ओन कंस्टिट्यूएंट्स आर एंगेजिंग विथ यू ऑन दैट। तो इवन विदाउट ओवर्ट लॉबिंग और बिग अमाउंट्स ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल पाक पैक की जो टोटल स्पेंड है, दिस इज ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इज लेस देन $300,000 इन दिस कैंपेन। हम्म। Kamala Harris, for comparison, has a total budget alone of $1 billion. You know, billions of dollars are being spent on this election. So even if you say कि अच्छा जी पाक पैक वालों के लेस देन 300 हैं, बट उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली भी पैसे दिए हैं, चले मैं उसको कह देता हूँ कि 10 टाइम्स कर दें, 3 लाख से आप $3 मिलियन कह दें क्यूमुलेटिव आपने स्पेंड किया एज अ कम्युनिटी ऑन दिस इशू, on this election. In the grand scheme of things, it's not a lot of money, right? So yes, you can get across that hurdle, even without that money, is my argument, because the ask is so low कि अच्छा भाई जमहूरियत की आपने बात करनी है, which is where it's resonating. But उस रेजोनेशन के अंदर भी जो, अगर आप डिवाइड देखें पार्टी ब्रेकअप का, तो आपको प्रोग्रेसिव लेफ्ट ऑफ सेंटर रिपब्लिक डेमोक्रेट ज़्यादा नजर आएंगे क्यूमुलेटिवली, एज अपोज टू राइट ऑफ सेंटर रिपब्लिकन्स। आप जो चाहें, लेट्स ले इट स्ट्रेट, अगला प्रेसिडेंट ट्रम्प ही है ना? Yeah, it's hard to tell. But before I go to that, let me come back to one thing, हम्म। because you were doing the straw man on the PTI side, right? आपने कहा कि prop up करते हैं, जो कि काफी लोग कहते हैं. So it's a good point to raise. But my question to you then, if you were to play out this conversation, right, is किस तरह prop up कर रहे हैं? अमरीकी इमदाद पाकिस्तान की is at an all time low. अमरीका पाकिस्तान को इस वक्त कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सारे प्रोग्राम स्टॉल्ड हैं इस वक्त. अमेरिका जो है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो कंपनीज हैं उन पे सैंक्शंस लगा रहा है. अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टेररिज्म के ऊपर डू मोर की कह रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली अरेबियन सी में 2 नेवी सील्स मारे गए बाय आफ्टर इंटरडाइटिंग अ नेवल वेसल, जिसके अंदर वॉरहेड्स जो हैं वो हूथीज को लेके जा रहे थे, पाकिस्तानी शहरी, राइट.
तो इन सब चीजों पे where is the what do you say is the evidence for propping up quote unquote the Pakistani आई regime? IMF भी, उन्होंने एक जो लेटर भी इशू किया था, बाइडेन शोड सपोर्ट। या आई मीन सो लेटर जो है जो कंग्रेचुलेशंस का वो हिस्टोरिकली दिया जाता है बाइडेन हैज डिड नॉट कॉल इमरान खान ही डिड नॉट कॉल शहबाज शरीफ राइट सो नंबर एक शहबाज शरीफ क्या लाइन में लग के आईएमएफ मिले थे? अभी जब मिले, डिड ही स्टैंड इन नहीं लाइन? मुलाकात जो एक ट्रेडिशन है पुराना अमरीकी सदर जो है वो किसी भी न्यूली इलेक्टेड लीडर को हिस्टोरिकली जो करीब के ममालिक होते हैं इवन फॉर एग्जांपल इराक के अंदर कॉल करते हैं या बात होती है कंग्रेचुलेटरी वो ना इमरान खान से हुई थी और ना फेमसली ही कॉल नहीं आई थी उन्होंने इमरान खान को तो। हाँ तो कॉल वो नहीं हुई थी और इमरान खान ऑलरेडी वाज प्राइम मिनिस्टर सो ही हैड नॉट वन बट एक होता है पोस्ट इलेक्शन हम्म। जब जो बाइडेन एंटर्ड ऑफिस ही डिड नॉट एंड ही डिड नॉट कॉल शहबाज शरीफ एनीवन वो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस का ट्वीट और लेटर इशू किया था तो नंबर एक ही है नंबर दो आईएमएफ सो आईएमएफ के अंदर अगेन द यूएस हैज इन्फ्लुएंस बट आई वुड आर्ग्यू मोर इम्पोर्टेंटली जो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट हुआ पिछले 2 या 3 प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान के आईएमएफ बेल आउट के लिए वो ज़्यादातर चाइना और पाकिस्तान के बायलैटरल पार्टनर्स इन द गल्फ इन पर्टिकुलर सऊदी अरब की तरफ से हुआ था बिकॉज अगेन दे आर द मेन at this point in time, globally from a geopolitical standpoint, stakeholders in Pakistan. So American influence leverage is nowhere near what it used to be in the Musharraf era or in the first Zardari यू administration जब कैरी लूगर बर्मन बिल था और ये सब था. यू आर सेइंग अमेरिका डज नॉट हैव वीटो ऑन IMF? ऑफ कोर्स It इट does डज। not have an overt. It doesn't have an overt veto, Shazad. I think there is a ओवर्ट voting नहीं, structure बट where it इफ can इफ influence. अमेरिका डजंट वांट एन IMF डील टू गो थ्रू, इट वोंट गो थ्रू। आई मीन इफ Correct. So देयर, it won't go या, through. And the United States did not stop a Khan government from getting access to IMF funding, and the American government did not stop a caretaker or tail end of the PDM government from getting a standby arrangement. And even a Trump administration, if you were to play this out, regardless of who's in power in Islamabad, will not want to veto over Pakistani funding in the status quo relationship. और उसकी वजह बड़ी सिंपल है शहजाद और ये पाकिस्तानी इलीट्स आप अगर उनसे बंद कमरे में खामोशी से बात करें तो एंड में जाके बात यही आती है वी आर टू बिग टू फेल विच मेक सेंस आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं 250 मिलियन का मुल्क है और आप एक ऐसी ज्योग्राफी में रहते हैं जहाँ आपके यहाँ अगर क्राइसिस हो गया और आप डिफॉल्ट की तरफ चले गए तो it's unknown what can and cannot happen, right? So even if you're anybody serious in Washington, D.C., whether you're in the CIA, DOD, White House's National Security Council, or the State Department, your advice, regardless of who the president is in office and whatever they may or may not think about Pakistani democracy, will be, okay, boss, it's cheaper to give them another $5 billion through the IMF with some conditions attached as opposed to letting this whole thing blow up because we don't know. We don't want another crisis on our hands, especially right now. हमसे ही तो लेंगे वेपन्स, उसके बाद तो दे देते 5 बिलियन। सो जैर, आपके चेहरे पे दुख हमें नजर आ रहा है, बट आवे ही आवे, ट्रम्प आवे ही आवे। Trump, I think it's a toss-up, Shazad. Like इस वक्त अगर आपने आज का बेटिंग भी जो मार्केट फॉर देखी है? एग्जांपल आपने बेटिंग बेटिंग मार्केट मार्केट्स देखी? में तो हाँ उसके अंदर जो फ्लो है वो ओवरवेलमिंग फेवरेट इट्स है ट्रम्प। overwhelming favorite है but उसके अंदर again there has been very good reporting about why that's the case right because there's a whole Bitcoin is up on the Trump trade there's a Trump trade being played out on poly market which is skewed a certain way but then if you look at sort of combinations of polls and people who've been forecasting etc all of them are like this is a toss up economist ka aaj subah ka jo most recent update and they I think will be doing this every single day now because the last set of polls are coming out every day um uh it's a toss up it's tied at 269 electoral votes और उसके साथ साथ अगर आप और भी डेटा के अंदर जाएं तो 60 मिलियन लोगों ने तो ऑलरेडी अर्ली वोटिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो इलेक्शन इज ऑलरेडी अंडर वे आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी easy to say इस वक्त कि कौन जीतता है but there are scenarios you can think through right you can think through the makeup of the coalition on both sides and in that sense my view is there are three unknowns if you were to think about sort of like the scenarios of the results potentially पहला unknown ये है कि there is a significant chunk of right of center American non MAGA voters. Not easy to quantify. The closest proxy to quantify them through, in my opinion,
इसके आप जाके देखें प्राइमरी वोटिंग पैटर्न्स इन द रिपब्लिकन प्राइमरी, जहाँ निकी हेली इवन आफ्टर शी हैड लॉस्ट कंटिन्यूड टू गेट वोट्स. So you could say, okay, that's one way to look at who are the non-MAGA voters who are so committed कि ट्रम्प के जीतने के बाद भी उन्होंने प्राइमरी के अंदर जाके वोट डाला निकी हेली को. तो एक चंक ये है. दूसरा चंक है women, particularly women that live in more conservative parts of America, because abortion is on the ballot box. Again, it's such a personal issue. It's such a emotional issue. It's such a polarizing issue in the context of the American society right now that it's hard to capture. Suburban women you can capture in affluent areas in particular, but a chunk of it you cannot capture. So you don't know how they're going to break. So they will decide, number two, in my mind. And then I think the third one is this weird makeup of different communities of color, and where they end up going. So, for example, agar abhi Carnegie ka latest data aaya hai, shows 61%, according to their poll, of Indian Americans are for Kamala Harris, right? It's down from where Biden was. It's a 6 or 7 percentage point decline, and a similar bump up for Donald Trump, closer to 30% there, but still a vast majority, right? And they talk about the same things in terms of why they support Harris or why they support Trump. Like things like immigration on the right are number one, and things like danger to democracy and we are okay with where the economy is right now, are on the left side, right? So where do these communities of color end up going, and how do they break in the last 10 days when you're thinking about the fact that, hey, do I want to live in an America where, yes, I have significant problems from the with the left in terms of what they're doing and what they've done, versus the fact that the other guys like empowering the Ku Klux Klan. राइट, मेरे अपने दोस्तों ने फ्लायर्स देखे हैं कू क्लक्स क्लैन के वापसी आते हुए अपने इलाकों में. तो दैट इज वेयर वी आर. डोंट यू थिंक ये थोड़ा लेफ्ट लिबरल मीडिया भी थोड़ा सा स्ट्रॉ कर देता है? अभी हम टोनी हिंचक्लिफ का स्टैंड अप भी डिस्कस कर रहे थे, जस्ट बेस्ड ऑन दैट एंड सम अदर थिंग्स आई सॉ फ्रॉम दैट. नाजी रैली तो नहीं थी, तो ये कहना है एमएसजी में नाजी रैली हो गई, नाजी रैली हो गई. तो वो इस तरह की जब फ्रेमिंग की जाती है, उसका भी एक रिएक्शन नहीं आता ट्रम्प सपोर्टर्स का कि यार आप लोग तो जो हमें बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स की तरह पेंट करते हो, वैसी की तैसी तुम्हारी. तो दिल ऑल्सो बी लाइक एन इफ यू वोट टू द एस्टेब्लिशमेंट समहाउ, despite being the Republican candidate, Trump is the anti-establishment FU to the establishment candidate. I mean, that's a fair way to look at it, right? But then the flip side of this also would be, well, they talk about the enemy within as well, that is vermin and that is Mhm. poisoning the Yeah, yeah. blood of America. So that Uh-huh. law that Nazis use that language, right? Let's be very honest. You know this. You've done Mm-hmm. the entire explanations on sort of how Nazis used to talk about things. So when that context is what is being sort of, talked about in the left liberal media as well. And then on both sides, obviously, they get pissed off of things that the other side said, right? So for example, ये रैली हुई, इसके ऊपर पूरा पुशबैक आया, पोर्टो रिको इज अ पाइल ऑफ गार्बेज ईटीसी कहा गया, उसके ऊपर पूरी कवरेज थी. लेकिन कल बाइडेन ने somehow said something about the fact that he thinks the voters or the supporters of Donald Trump are garbage. And for the last 24 hours, that's been the one of the main headlines, right? And he's had to walk it back, etc. So I think that's the polarized environment we live in. But the reality at this point, Shahzad, is that what the right of center MAGA takeover of the Republican Party has done, it has unleashed things that have always been in America, mind you. They're a very deep part of the reality that America for many was conceived as a white Christian nation. And now that that's changing, it's causing a lot of these things to come back. I was reading or listening to a historian unrelated to the political cycle. They were talking about the broader conversation in American history about what it took to become a state. The Mason-Dixon line and the battle over slavery was related to this. How do you get into the American system as a state, and what the balance of power used to be at before the Civil War? And he was very honest. He was like, if you look at the historical record, there's only one criteria. He referred to as the magic pixie dust, and that is that there are more white people living in that Mm-hmm. jurisdiction than there are other people. And so long as you can show that, you will be a state, which is why where I live, for example, in DC, right? If you talk to
people who are historians of DC or have lived in DC for a really long time and know the history of this city, they always connect the fact that DC does not have statehood, primarily because of the fact that it was always a chocolate city. And because it was a chocolate city, mainly primarily African American in population for a long period of time, and then with a big Latino population, the pixie dust was never there, which meant that if you made it into a state, then those two senators would always be not Mm. part of the right of center worldview in American politics, and would skew the makeup of the Senate permanently. And that's why DC never to this day has become a state. आई एम श्योर दैट अपील्स टू लॉट ऑफ वोटर्स। ट्रम्प जिस तरह के ग्राफिक्स पोस्ट कर रहा है कि इमिग्रेंट्स आ जाएंगे, कत्ल कर देंगे, एंड देन इट्स द सेम आइडिया राइट, तुम्हारी औरतों को उन्होंने शुरू ही अपनी कैंपेन मैक्सिकन को रेपिस्ट बोलकर किया था। एंड नाउ तो ही इज आल्सो इन्वोक्ड द एलियनेशन एक्ट ऑफ द 1700s। तो यस, ट्रम्प माइट बी इन नॉट द स्मार्टेस्ट टूल इन द शेड, लेकिन स्टीवन मिलर जैसे जो लोग हैं उन्होंने तो 6 डिग्री तक प्लान बना दिया है डिपोर्टेशन का। उन्होंने सीधी सीधी तस्वीर उठाकर एक लेटिनो की दिखाकर बोल दिया है कि यार ऐसे लग रहे हैं अब तुम्हारे नेबर्स, इस तरह के दिख रहे होते हैं। तो द रेसिज्म इज ब्लेटेंट, इट्स ओवर्ट। एंड आई थिंक जो पिछली दफा तो उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी फेल हो गई थी, नाउ दे नो द सिस्टम एज वेल। सो आई डू थिंक लेफ्ट लिबरल मीडिया भी फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इस दफा लेजिटिमेट थ्रेट भी है कि ये जो डिपोटेशन और पहले दिन की बातें हो रही हैं, these are not the same as I'll build a wall. Am I fair to say that? Absolutely. And I think the other thing I would add to this also is कि not only इनको समझ कम थी 2016 से 20 तक, पैंडेमिक भी आ गया बीच में, प्लस मोर इम्पोर्टेंटली there were a lot of people who you and I may disagree with ideologically, politically. People like Mike Pence, people like Mm, John Kelly, etc. But they were inhibiting the worst instincts of the president and the White House at that point in time. Right. And so, yes, you could look at them and say, oh, they were sort of in the system. If you're mm, on the right, if you're Stephen Miller, you would say कि वो president की wishes को undemocratically रोक रहे थे। ये एक व्यू है जो कि राइट का जेडी वैंस और इन सब का व्यू है। और एक व्यू है लेफ्ट की साइड का कि ये इनको पावर चाहिए था और इस वजह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और मागा को ज्वाइन किया। लेकिन अब वो भी बिग्रजनली कहते हैं कि ठीक है, माइक पेंस जैसा भी था, जनवरी 6 को उसने mm, कहा कि भाई हम आईन है हमारे मुल्क का और जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं कहूंगा, और उसकी सजा उसको ही केम वेरी क्लोज टू, देयर वाज अ नूस लिटरली इन द mm. कैपिटल व्हेन ही वाज Hang इनसाइड। Mike उसको Pence, hang टंगाने Mike आए थे। Pence. हाँ हाँ हाँ, हाँ उसको टंगाने, लिटरली हाँ टंगाने आए थे ना लोग। तो ही पर्सनली उसने बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान का रिस्क लिया उस मोमेंट के अंदर, राइट। तो लेफ्ट में भी begrudgingly लोग कहते हैं कि ठीक है, we may ideologically not see eye to eye, but you stood up for the constitution and the rule of law at that point in भाई time. 22 अप्रैल अब को उमर मसला अता बंदयाल ने भी यही किया था। पुलिस की गाड़ी कहाँ थी? um, तो उसके अंदर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो इस दफा डेंजर ये भी है कि नॉट ओनली डू दे नो मोर अबाउट हाउ टू रन, बट हम्म। जो इनहिबिटर्स हैं वो भी इस दफा मौजूद नहीं होंगे। सुप्रीम इस कोर्ट भी दफा मिल पूरा गया अब का तो। पूरा अब सुप्रीम कोर्ट तो भी मिल सुप्रीम गया है। कोर्ट आज भी जेब सुप्रीम में है। कोर्ट ने उनको इजाजत दी है वर्जीनिया के वोटर रोल्स को पर्ज करने की बिफोर द इलेक्शन। तो लिटरली आज सुबह की हेडलाइन ये थी। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी देयर्स, एंड इफ यू रिमूव मोर चेक्स एंड बैलेंसेस, सुप्रीम कोर्ट ने तो इम्यूनिटी की हम्म डेफिनेशन भी जो है वो सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन कर दी है। तो इट इज अ वेरी टच एंड गो सिचुएशन। इसके अंदर बिफोर यू आस्क अनदर क्वेश्चन, राइट, आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन है हमारे डायस्पोरा में, अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा में, आई थिंक जो इन पर्टिकुलर हमारे जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो 70s 80s में आए, उनको आई थिंक समझने की ज़रूरत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो सक्सेस है इस मुल्क के अंदर, आपका जो पैसा आपने इस मुल्क के अंदर बनाया है और आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो आपको वाइट सुप्रेमेसी से अगर प्रोटेक्ट हम्म करेगा, तो आप बहुत मिस्टेकन हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। आप जब आए थे 60s के बाद इस मुल्क के अंदर, तो आपको जो है घर जो किराए पे मिलता था कम्युनिटी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए मिलता था क्योंकि मार्टिन लूथर किंग और उसकी पूरी मूवमेंट ने, जो है ब्लैक अमेरिका की मूवमेंट ने, प्रेशर करके फेयर हाउसिंग एक्ट पास करवाई थी। उससे पहले वाइट सुप्रेमेसिस्ट आप हो या यहूदी हो या कोई काला हो,
अफ्रीकन अमेरिकन हो, वो आपको अपनी कम्युनिटी में रहने की इजाज़त भी नहीं देते थे। तो अगर आपको लगता है कि रिटर्न ऑफ वाइट सुप्रेमेसी जो है वो आपको नहीं छुएगी, क्योंकि आपके पास एक बड़ा सा घर है फ्लोरिडा के अंदर या ओहायो के अंदर और अच्छी सी टेस्ला है और आप अमीर हैं, और क्योंकि आप जेडी वैंस या माइक जॉनसन या इनके फंड में हाथ मिलाते हैं और तस्वीर खिंचवाते हम्म। हैं, तो आई एम सॉरी टू से अंकल, यू आर वेरी वेरी मिस्टेकन अबाउट what white supremacy will do if they are हम्म। empowered in this country. ये एक पूरा स्टैंडर्ड स्पेशल भी है, द ब्राउन वाज ब्रॉट टू ब्रिंग द ब्लैक डाउन। तो वो एक मॉडल माइनॉरिटी बनाकर भी ब्राउन लोगों को लेकर आए थे और इमिग्रेशन करवाई थी कि अच्छा यार काले लोगों को नीचे रखो। और वो कॉलोनियल स्लेव्स वाली जो हमारी बाबू क्लास है जो भाग गई दूसरे मुल्कों में, वो यूके में घड़ियों के पीछे भाग रही है। बट यूएस में भी उसकी यही मेंटालिटी है कि अच्छा यार काले लोग बुरे होते हैं। तो वो समाव उन्होंने सारा वाइट प्रोपागेंडा घोल के पी लिया है। एंड शायद गोरे लोग अब एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, काले लोगों से नफरत नहीं करते जितनी Yeah. पाकिस्तानी करते हैं। इन टर्म्स ऑफ Like परसेंटेजेस आई वुड आर्ग्यू UK दैट में 90% पाकिस्तानी hate black people and minorities in America. I mean, there's a big internal issue with racism and हाँ homophobia and anti-Semitism in our community, and we should be very open about यार। this. Like मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अमेरिका आया 2007 में, ठीक है ना? तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इन सम ऑफ द मॉस्क्स, लाइक लेट्स बी वेरी कैंडिड, इट्स बिन लाइक क्या बात कर रहे हो यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, मैं अब एक एग्जांपल पब्लिकली देता हूँ कि आई यूज्ड टू लिव इन न्यू जर्सी जब सैंडी हरिकेन आया। डेवस्टेशन मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बिल्डिंग के नीचे पानी आता हुआ देखा है, और हम न्यूयॉर्क नहीं जा सकते थे एक हफ्ते तक बिकॉज एवरीथिंग वाज फ्लडेड। उसके जहाँ हमारे जैसे ही वो सपने खुला खत्म होते हैं वहां आपकी स्ट्रगल शुरू होती है। बिल्डिंग तो में अगले पानी आना हफ्ते, यार, ये तो डीएचए में वी कॉल इट yeah, it फ्राइडे। was. It's the biggest storm in my life that I've seen, right? I mean, when you see the storm ओहो, surge come बिल्डिंग in, बिल्डिंग में you पानी आ गया realize, उजैर। हाँ, बिल्डिंग ये में तो पानी बारिश आ नहीं रहा है होती तो बिल्डिंग में पानी आ जाता है यार। बंदा पानी आ सोचता है जाता है, कि एग्जैक्टली। अभी तो कहत चल रहा क्या है, करें। ये बेसमेंट कैसे फ्लड हो गया? नहीं सर, वो नाला नाला खुल गया था। नाला खुल गया था। तो अगले हफ्ते उसके हम जब गए वापसी न्यूयॉर्क, तो जुम्मे का दिन था। मैनहट्टन में एस होटल के सामने जो है बिल्कुल लेक्सिंगटन एवेन्यू मिड टाउन के अंदर एक मस्जिद है। वहाँ हम जाते थे नमाज पढ़ने, मैं जाता था नमाज पढ़ने। तो वहाँ गया जुम्मे की नमाज में, तो जो इमाम है वो इजिप्शियन अमेरिकन इमाम था। वो कह रहा है, अच्छा अब न्यूयॉर्क के अंदर यू लिव देयर, जगह बहुत कम होती है इवन मस्जिदों के अंदर, तो वो बाहर साइड वॉक ब्लॉक कर देते हैं जुम्मे के दिन नमाजियों के लिए, और पुलिस एनवाईपीडी उसको सेफ गार्ड करती है उस इलाके को। तो अब बाहर भी आपको आवाज़ आ रही होती है खुतबे की। तो आप इमेजिन करो कि बाहर एनवाईपीडी कॉप्स जो हैं, जो स्टैटन आइलैंड से कोई आया होगा, कोई लॉन्ग आइलैंड से आया होगा, हो सकता है उसके घर में डैमेज हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो अंग्रेजी में खुतबा सुन रहा है जुम्मे का, और इजिप्शियन अमेरिकन इमाम कह रहा है कि ये जो तूफान आया है, ये तबाही जो मची है न्यूयॉर्क में, वो इसलिए मची है क्योंकि खुदा का अजाब है, क्योंकि न्यूयॉर्क ने जो है वो LGBTQ राइट्स जो हैं वो ज़्यादा लिबरलाइज कर दी हैं। मैंने अपने कानों से ये खुतबा सुना है। एंड जस्ट इमेजिन, योर पीपल आर वॉकिंग आउटसाइड दैट mosque and they can hear the sermon, because New York City, like, it's always, people are हम्म। always on the sidewalk, and you are basically using your pulpit at a time of real pain for the community around you to basically bully and justify destruction by saying कि वो वाले जो लोग हैं ना, वो जो हमें पसंद नहीं है, उनकी हम्म। वजह से अल्लाह का अजाब आपके यहाँ है। तो ये है प्रॉब्लम कम्युनिटी के अंदर, इमाम को वी समझ शुड नहीं आई होगी ना, उनको एक्सेप्ट किसी ने इट। बोला होगा सैंडी इज वेट, उनको लगा ये, उनको बोला नहीं भाई सैंडी हरिकेन का नाम है। इसलिए यू शुड हैव गॉन या टू द एनवाईयू मस्जिद यार, वो करीब ही है, वो कूल है उधर के हाँ, वो वहाँ। तो देन आई स्टार्टेड गोइंग देयर ऑल द हाँ टाइम, हाँ आई यूज्ड टू हाँ स्विच, जहाँ जो कन्वीनियंट होता था वहाँ चले हाँ। जाता। दिस वाज वन ऑफ द मोर कन्वीनियंट वंस फॉर मी, एंड देन इमाम खालिद ऑब्वियसली एट NYU, इट्स लाइक वेरी वेरी सिंस वी गुड। आर ऑन द मुस्लिम अमेरिकन एक्सपीरियंस, मेरी नज़र में तो बहुत गालियां पड़ने वाली हैं अगर ट्रम्प जीतता है। नंबर वन टारगेट जो है वो मुस्लिम अमेरिकन होंगे। अभी वाज इट डिट्रॉइट मिशिगन जिनके एक मौलवियों ने भी जाकर इंडोर्स कर दिया, एंड देन सम
people on Twitter were like, "This is going to be a historic mistake. This will be like written." ये किया क्या है तुमने? That being said, Arab Americans who are not voting, they have every right not to vote or to vote for Jill Stein के डेमोक्रेट पार्टी ने जिस तरह कमाला हैरिस ने शट डाउन किया है कि कोई पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट बोल रही थी, उससे शट अप आई एम टॉकिंग करके उसको एक स्लोगन बना दिया है. सो द फैक्ट दैट द डेमोक्रेट पार्टी हैज डन वेरी लिटिल फॉर genocide or to prevent genocide in Gaza, they will lose a big chunk of the Arab American votes. And जो लोग सुन रहे हैं जो शायद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूंसीज को नहीं समझते, they will be like कितने ही हैं मुस्लिम अमेरिकन. बट ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, पीपल लाइक स्टेट्स लाइक पेंसिल्वेनिया, losing the Muslim American vote for the Democratic Party in Pennsylvania could mean that they're going to lose the entire election. So how important will the Muslim American vote will be? I think it's very, very important, particularly in a place like Michigan and Pennsylvania. Just for context, अगर आप इलेक्शन के दिन की अमेरिकन इलेक्शन आपके चार यहाँ स्टेट में मैटर करता है बस. हाँ, छः मतलब ज्यादा से हाँ. ज्यादा खींचना है तो छः या सात कर लो, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली अगर आप 9 बजे पोल्स खत्म होते हैं और रिजल्ट्स आने लगते हैं 10-11 बजे ईस्टर्न टाइम, पाकिस्तान में सुबह हो रही होगी और आप टीवी अगर देख रहे हैं, तो अगर आपने ये देखा कि पेंसिल्वेनिया कामला हैरिस हार गई है, ठीक है ना, या हारने वाली है, इसका मतलब इलेक्शन खत्म हो चुका है, गेम पीटीआई ओवर। के झंडे लगा यू लो कैन नॉट पाकिस्तान विन, में. you cannot win the Democrat as a Democrat the presidency either which way, both ways. हम्म. पेंसिल्वेनिया जो जीतेगा उसका ऑड जो है वो नेट सिल्वर के 538 पे जो है स्काई रॉकेट कर जाएगा। तो उस कम्युनिटी में अच्छा, पेंसिल्वेनिया की जो इम्पोर्टेंट बात है, मिशिगन में अरब अमेरिकन ज़्यादा हैं, लेबनीज अमेरिकन हैं, देर नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम अरब अमेरिकन बोथ इन दीज कम्युनिटीज। Jewish population भी बहुत ज़्यादा है, so it's a game of inches in that. Yeah. और अब क्योंकि you indicated and talked about the Madison Square Garden rally, a lot of Puerto Ricans in places like Lehigh Valley in Pennsylvania, ठीक है ना, तो एक these swing states are really a microcosm of the diversity that has become the norm in America. So this vote will matter on the Muslim American and Arab American side. Michigan, for example, अगर आप 2020 का डेटा उठा के देखें तो roughly 65-67% of Muslim Arab Americans voted for Joe Biden in Michigan. 2 लाख के करीब वो थे, तो यू डू द मैथ एंड देन यू लुक एट द मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड यू बेसिकली से कि अगर वहाँ 20-25 परसेंटेज पॉइंट का फर्क होता वोट के अंदर, सिर्फ उस कम्युनिटी के अंदर, ही वुड हैव लॉस्ट, right? So it matters a whole lot, and there's a lot of diversity. This group is not a monolith, right? So there's a lot of diversity in these communities, which makes it even that much harder to have a guess of how they will vote. But yes, there will be a significant decline in that vote. My mind, perhaps we are looking at a similar inflection point in voting patterns among Muslim Americans that we saw post Iraq War. Iraq War se pehle, historically, Muslim Americans voted primarily Republican on the ticket. 9/11 war on terror, Iraq के बाद Muslim American vote increasingly became Democrat leaning. It became, in my mind, if you now we look back at history, I think it reached its peak for the Democrats in the 2016-2020 cycles. And now, much like the Indian American vote, the American Asian Pacific Islander vote, the Latino vote to an extent as well, it's coming down from that peak and sort of going slowly towards Donald Trump, which is why I tell a lot of people who sort of are more in the right of center conservative circles that अगर ये Republican Party अपने xenophobia sliding scale को जो है वो 12.5 से 7.5 पर भी ले आए ना अगर, तो they will gain a lot of people of color in their constituency as voters. पर वो होगा ना, दैट बी लाइक अ सॉफ्ट गेन. वो जो पंप्ड अप वोटर है वो जीनोफोबिया से ही आता है. वो That's जिस तरह हम exactly the problem. पाकिस्तान में भी डिस्कस कर लें, इंडियन इलेक्शंस में भी हमने डिस्कस किया था कि जब फील आई कि यार वोटर जो हमारा कोर है थोड़ा ठंडा है, तो थोड़ा घुसपैठिए बोलना पड़ा. तो वो जो Yeah. आपको चार्ज रखना ही रखना है सपोर्टर को. एंड जो आप बता रहे हैं कि ये इलेक्शन स्विंग कर सकते हैं, उसकी वजह से हरिकेन्स भी तो आ रहे हैं ना. यू मेंशन्ड लेबनीज अमेरिकन, तो वो इजिप्शियन ने भी बोला था कि उन्हीं की वजह से. Yeah, exactly. तो the base, you're absolutely right. जो xenophobia का जो बेस उन्होंने जो हम्म. जहर डाला है अपने कोर कंस्टिट्यूंसी के अंदर, वो बड़ा मुश्किल कर देता है अब उसको
ट्वीक करना। अगर आप फॉर एग्जांपल यू लुक एट द डेटा आउट ऑफ मेन, राइट, ऑन द मैप मेन इज एज फार एज यू कैन गेट इन अमेरिका अवे फ्रॉम द सदर्न बॉर्डर। और आप वहाँ रिपब्लिकन्स के देखें कि पहला इशू क्या है, तो वो कहेंगे इमिग्रेशन। अबे भाई मेन के वहाँ कौन सा कनाडा जो से है आ वो रही है क्या? साउथ से कनाडा से कौन सी इमिग्रेशन मसला इन्वेजन है आ रही तुम्हें? है बॉर्डर से, मतलब मेन मेन के में तो अंदर तुम बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारा कैनेडियंस ही नंबर वन इमिग्रेट कर इशू जो सकते है हैं वो वहां पर। इमिग्रेशन बना हुआ है। लाइक वहाँ वहाँ तो तुम्हें एक्चुअली इमिग्रेशन की जरूरत है, खाली हाँ, जमीन पड़ी है, इकोनॉमी अगर चलानी है, नर्सेस तुम्हें चाहिए, होजे ने आके तुम्हारा लैंड मो कर लॉन मो करना है, तो लॉबस्टर तुम्हें चाहिए पकड़ेगा। वो बंदा। होजे होजे आके लॉबस्टर पकड़ेगा। हाँ। बस सारे। तो वो तुम्हें लोग चाहिए, लेकिन तुम्हारे वहाँ इशू बना हुआ है वो अजीब सा। मेरा एक दोस्त रहता है, he's अमेरिकन, कॉकेशियन अमेरिकन, he lives outside Atlanta, so he was in town and I was talking to him. This is exactly what he was saying. He's a right of center guy, like, he's non-MAGA, but he's like, I'm the outlier in my group of guys who are like in their 50s. And he's like, every time I ask them, like, what's the issue, or I'm in a gathering, वो कहेंगे immigration। तो उनको कहता है, यार वेंचो तुम्हारे यहाँ कौन सा मसला है, तुम्हारा जो लाटिनो, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है किसी लाटिनो के साथ, वो तो सिर्फ उस वक्त है कि तुम जाके कहीं फ्रूट खरीदते हो तो वो तुम्हें देगा, या तुम टाको स्टैंड पे जाते हो तो तुम्हें टाको जो पसंद है वो तुम्हें लाटिनो बना के देता है, या तुम्हारे हफ्ते में जो $25 लेके जो तुम्हारी लॉन मो करता है आके बंदा लैंडस्केपर, वो लाटिनो है। तो तुम्हें कौन से लाटिनो ने कभी तंग किया है जो तुम्हारे लिए ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है? बट दैट्स द पॉइजन दे पुट इन, राइट, सो इट्स वेरी हार्ड टू टेक दैट पॉइजन आउट नाउ। इसमें जो पाकिस्तानी अमेरिकन वोट है, व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकंस, बिकॉज दे टेंड टू बी अ बिट मोर अफ्लुएंट। ये अभी हसान मिनाज अच्छा स्टैंडर्ड स्पेशल है, ही वाज आल्सो शोइंग ऑफ कि इंडियन या अमेरिकंस जो हैं दे मेक द मोस्ट मनी। तो वो क्रीम ऑफ द क्रॉप जाती है यार। पाकिस्तान के भी जो हमारे बेस्ट है वो जाता है। योर आगा खान ग्रेजुएट्स, योर उजैर यूनुसेस, मेरे जैसे जो कमतर होते हैं लोग, वो पीछे रह जाते हैं। सो देन दे अर्न वेल, दे डू वेल, तो वो फ्लुएंट भी हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन वोट है, लॉट ऑफ देम आर वोटिंग ट्रम्प, नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, बिकॉज देर लाइक यार इकोनॉमिकली हमें टैक्स ब्रेक्स मिल जाएंगे, एंड नाउ देर इन that social class where Trump's economic policies directly benefit them. तो वो जो एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है where minorities look the other way to get that economic incentive, what's your take on that? सो सी इसके अंदर आई वुड सॉर्ट ऑफ डिसएंटैंगल even the diaspora, Pakistani American diaspora. It's important to disentangle it क्योंकि there are multiple waves of the diaspora that have come in. शुरू की जो एक वेव थी वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स थे। फिर काफ़ी सारे जो आए, फॉर एग्जांपल ह्यूस्टन जैसे शहरों में, वो आए थे थ्रू द फार्म लॉ प्रोग्राम और द फार्म वीज़ा प्रोग्राम। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जो फार्म, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में खेती बाड़ी नहीं की थी, लेकिन वो उस वीज़ा के थ्रू आए थे अमेरिका के अंदर, और उसके बाद एमनेस्टी जब मिली तब वो रेगुलराइज हुए और वो अमेरिकी शहरी बनने के रास्ते पे गए। वो लीगल इमिग्रेंट्स थे एक ज़माने में। um, तो जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स की, यू कवर्ड दैट पॉइंट कि उन्होंने पैसा बनाया, बट देयर इज अ होल चंक ऑफ अमेरिकन पाकिस्तानीज, like the Indian Pakistani community as well, Indian American community, sorry, जिन्होंने कारोबार करके पैसा बनाया है। दीज आर द, एक गैस स्टेशन में काम करना शुरू किया, फिर एक खरीदा, चार खरीदे, अब उनके 5 7-Elevens हैं या चार मैरियट के, बेस्ट वेस्टर्न के मोटेल्स हैं, एक्सेट्रा। ये एक बड़ा चंक है जिसको हम हर इग्नोर नहीं गैस करना स्टेशन में चाहिए। 6 स्लॉट मशीन है। हाँ, या बियर से जो है वो अच्छे खासे, गैस से ज्यादा बियर से पैसे बनते हैं टेक्सास में, अगर आपने गैस स्टेशन चलाना है तो। विच इज़ अ वेरी लाइक फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन। अगर आप टेक्सास में, ह्यूस्टन में इन पर्टिकुलर रहते हैं तो एक ज़माने में बड़ी कॉन्वर्जेशन होती थी इस टॉपिक पे कि इमाम से पूछा जाता था कि मैं गैस स्टेशन चलाता हूँ और मेरे गैस स्टेशन पे मैं बियर भी बेचता हूँ, तो क्या मेरे लिए बियर बेचना हलाल है या हराम? तो वो एक पूरा एक डिबेट था कम्युनिटी के अंदर, सब कल्चर के अंदर। इसमें कोई वेरी डिबेट नहीं इंटरेस्टिंग। है। देर इज, But it was a यू conversation. कांट It was फाइंड अ just like a, जस्टिफिकेशन इन हाँ, इस्लाम फॉर, आई डोंट नो, बहुत ही कोई समर सॉल्ट करना पड़ेगा yeah, कि ठीक है बेच हाँ। दो। तो ये थी एक कॉन्वर्जेशन, राइट, क्या आपने पूछना पड़ता था, लॉटरी मशीन इज द सेम इशू, राइट, फॉर एग्जांपल। बट इन एनी केस, तो ये सेकंड कोहोर्ट है आपकी कम्युनिटी का। और जो थर्ड कोहोर्ट है वो आप जाके सेकंड जनरेशन, और द वंस हु केम फॉर यूनिवर्सिटी एंड देन स्टेड बिहाइंड, आई कम फॉल इनटू दैट बकेट. Those are the now lawyers, public policy professionals, some in the media, etc. Much more diverse in terms of its
ग्रोथ एंड देयर एक्सपोजर ईटीसी। तो उस इन इस कम्युनिटी के अंदर आई थिंक व्हाट द कॉन्वर्जेशन पॉलिटिकली दैट हैज बीन डोमिनेटेड पर्टिकुलरली पिछले 4-5 सालों के अंदर रिलेटेड टू द डायस्पोरा, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके फर्स्ट जनरेशन अंकल्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है और फिर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया इनटू इंस्टीट्यूशंस लाइक पाक पैक या अदर पैक्स या अदर अपना के अंदर वगैरह। हम्म। और अब वो जो उनका पैसा है, जो उनकी वेल्थ है, वो आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नज़र आ रही है। और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रॉक सॉलिड पीटीआई इमरान खान की साइड पर है। हम्म। इसी वजह से आपको नज़र आता है कि अपना के पिछले कई सारे इवेंट्स हों या पाक पैक की इंडोर्समेंट हो, तो उसमें जिक्र आपको इमरान खान या पीटीआई का हमेशा चीफ नजर गेस्ट आएगा। दिस इज डॉक्टर द फर्स्ट शहबाज गिल, कोहर्ट। वो अपना आपको इवेंट्स। हमेशा नजर आएंगे, एग्जैक्टली। तो ये कोर है। जो आपका मिडिल टीयर है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ठीक है, दे आर नॉट एज ऑर्गेनाइज ईटीसी, बट यू वुड से कि उनकी जो वेल्थ है वो आपको डिस्कोर्स के अंदर इतनी ज़्यादा ओपनली नज़र नहीं आती। कुछ की आएगी लेकिन मोस्टली नहीं नज़र आएगी। और जो थर्ड कोहोर्ट है वो ज़्यादातर इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक the silent people who don't have the big checks to cut in any case, but are doing their own jobs and are busy with their lives. But they also tend to lean more left comparatively, if I were to generalize these three cohorts. So the pehle do cohorts, and you're absolutely right. They are right of center for things like taxes, economic well-being, etc. Or the third cohort, second generation, grew up in America, experienced life, like Hassan Minaj talks about post 9/11, right? Yeah, Shadi Hamid will talk about this. Yeah, all of these people who are now in that space influencing the discourse, these are the people who are more left leaning because उन्होंने experience किया है खुद इस्लामोफोबिया को 9/11 के बाद अपनी जिंदगी में अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर। बट वही है ना, आई थिंक कि वो जो वोट था, पैलेस्टाइन इशू इतना डिसाइसिव भी है और डिवाइसिव भी है कि दिल पे पत्थर रख कर ही अब मुसलमान जाकर वोट देंगे, नोइंग फुली वेल कि यार आपने फंड किया है और अब भी आप कह रहे हैं कि आप करेंगे। तो लेट्स ओके, कोई खासा डिफरेंस आएगा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के आने से इन द इजराइल पैलेस्टाइन वॉर और द मिडिल ईस्ट पॉलिसी? I think it'll be more of the same across the board, whether it's a Harris or a Trump 2.0 administration. I think जहाँ फर्क पड़ेगा, again depending on the outcome, अगर एक outcome ऐसा होता है जहाँ डेमोक्रेट्स रिसर्जेंट होते हैं, तो जो अंडर का जो प्रेशर है पार्टी के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करेगा एक लिमिटेड तरीके से, लेकिन ज़रूर करेगा पार्टी को, बिकॉज दिस इज अ जनरेशनल डिवाइड विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इंस्टीट्यूशनली स्पीकिंग, विद इन द इंस्टीट्यूशन ये हम भूल जाते हैं हमारे डिस्कोर्स के अंदर कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर अभी भी एक महदूद बट छोटी सी जगह मौजूद है इस टॉपिक के पे बात करने के लिए, इस पे प्रेशर डालने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट। Palestinian American, Muslim American, Jewish American, etc., Black Americans, even white Americans है, constituency core rock solid है, ओबामा के टाइम से है वो constituency। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर की जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी बिलीफ के अंदर वेरी वेरी प्रो इसराइल है। और वो अगर जीत जाते हैं तो और एम्पावर करेगी। फॉर एग्जांपल, हम भूल जाते हैं इस पूरे साल के अंदर कॉन्वर्जेशन के अंदर ये बात कहना कि दो वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे नज़दीक डीसी के अंदर डिबेट इतना ज़्यादा ना होने की एक वजह यह है कि अमेरिका के अंदर फ़लस्तीनी एम्बेसडर नहीं है, जो कि यूके के अंदर आपको मौजूद नज़र आता है। वो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी छुट्टी जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। तो एक पूरा अपने डिस्कोर्स का एलिमेंट ही उसने एलिमिनेट कर दिया था वाशिंगटन के अंदर। दूसरी चीज जो लोग भूल जाते हैं कि जो ऑक्यूपेशन एक्सेलरेट की है पिछले 10 सालों के अंदर इसराइल ने, इन पर्टिकुलर ईस्ट जेरूसलम के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर, उसकी जो इजाजत है वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी बाय मूविंग द एम्बेसी फॉर्मली एम्बेसी, इनटू या जेरूसलम, जो कि नहीं किया था। जैरेड कुशनर तो गए हुए थे ना। या हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये उस मोमेंट में हमें सिंबॉलिक लगती हैं, और काफी लोग जो पैसिवली इस इशू को फॉलो करते हैं वो भूल जाते हैं, बट दे हैव बिग ramifications in terms of giving space to Israel. So I always remind people about this, Shahzad, is that it is not
कि ये आसान choice है, and it's not my job or your job to tell people how to vote for. But the question I was posed with a couple of friends of mine who I respect very much and are much more mature thinkers when it comes to this very problematic, very tricky, emotionally tricky topic is कि under what environment would you rather be organizing for this cause? And that is one question that was posed to me that made me think a bit more, right? And the second question slash comment that somebody shared with me, their sort of partner is African American, so they were sharing that point of view as well. And this was an important point that made me think a bit differently, right? If you look at people like Joe Biden, and you look at even his critique in the black community today, they point to him, Bill Clinton, etc., as people who passed the super predator law, which you know about. A lot of people, if they don't, हम्म you can Google it. हम्म Tough on crime, वो पूरा एक जमाना था war on drugs हम्म का. And they say that despite all of that, we kind of knew that in him we had still an imperfect environment under which we could organize, but not under the modern Republican Party. No way in hell under the modern Republican Party could we achieve the types of outcomes we as a community wanted to achieve. And so I always, that comment made me think about and look into deeper into sort of the long struggle of African American community in America and how they've gone through betrayed time after time, but continue to struggle, continue to organize, continue to push the envelope. And that makes me think that this question of under what condition do you organize under is very important in the long game. And that's where I always say, okay, I understand you want to vote for a third party. I understand you don't want to vote for Democrats, maybe in a swing state, maybe in another state. But in particular, in a swing state, a vote for, in my opinion, a third party candidate or a Donald Trump candidacy is phenomenally more dangerous if you think about it from the Palestinian cause lens than anything else, in my view. आई वुड हैव वोटेड फॉर जिल स्टाइन. इसमें अगर हम टोनी हिंचक्लिफ ने जो कहा कि आप कहते हैं भाई प्रो वॉर होगा, ट्रम्प ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट है जिसने एक बॉम्ब नहीं गिराया, तो डेमोक्रेट जितनी भी पोजीशनिंग कर ले, मे बी वी नीड टू कहाँ आल्सो नहीं सेपरेट, गिराया? मे बी आल्सो नीड टू सेपरेट के लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी. फॉर इंस्टेंस यूक्रेन वॉर, आई थिंक अगले दिन खत्म हो जाएगी. think that I think before entering the office, Trump Ukraine war खत्म कर देगा. तो the America first policy, the restricting foreign aid, will that indirectly uh, help the Middle East? No, but see, Shehzad, I'll push you on this point, right? People say, I'm not saying you say it, but हाँ हाँ, people डेविल्स say कि एडवोकेट उसने कह रहा हूँ जंग मैं. नहीं की. उसने जंग नहीं की. Donald Trump dropped some of the deadliest, biggest, most massive bombs in Afghanistan in 20 years of war. That's just a fact, right? Even though he claimed he wanted to, end the war and pull the troops back. If you look at the bombing campaign under his administration and the scale of the bombs that were dropped, the size of these bombs, they were bombs that were not dropped. He enabled massacres in Yemen, right? And American planes were refueling the Saudi jets at that time. And there was deep, deep American involvement in the Yemen conflict during his administration, right? So, this idea that he somehow is anti war, I don't fully buy into that. I appreciate that there is a deep, anti-war constituency within the Republican establishment now. But I think if he were to come back to power, he might allow Israel to go strike Iran's nuclear assets. Do you not think that's going to start a bigger regional war? I think absolutely it will. I mean, absolutely he will, but he also ended the war in Afghanistan. It was his decision. बस No, हुआ he वो did not बाइडेन के end it. टाइम पे. Of course he did. He No, there was he announced it कि यार इस दिन होगी, and then Biden administration came, but Trump is responsible for ending it. the Doha peace deal was signed under Donald Trump, and there was a timeline of withdrawal against Hmm. certain criteria. But even if you look at the timeline for that withdrawal as the deadline was approaching under Joe Biden, the Republicans were saying, and a big chunk of the Democratic foreign policy elites were saying, "Okay, extend this. There's no reason for this because they're not going to survive the Ghani regime." So, yes, he signed the Doha peace agreement, but ultimately, the call likely could have been punted down the road. And yes, Joe Biden said, no, whatever happens, happens. We're sticking to this. But there was a lot of pressure in Washington to delay this at that point from the Republicans and the Democrats. It wasn't a done deal until the president said, I'm done.
Trump, don't you think it's a lot of it is just posturing? Matlab, he will go on TV and threaten nuclear war against Iran. I don't think he's going to do it. इतना भी बेवकूफ तो नहीं हो सकता. Probably not. But see, again, I think base case scenario, I agree with you. But the way I also think about it is कि अगर आप जो है मोहल्ले में खड़े हैं और मोहल्ले का एक चौधरी है जिसका दिमाग शॉर्ट हो जाता है कभी हर थोड़े टाइम बाद, और उसके बाद एक बड़ी सी AK-47 है, तो क्या आप उस मोहल्ले के कोने पे उसके सामने खड़े रहेंगे आराम से, ये उम्मीद लगा के कि हाँ सिर्फ बोलता है AK-47 चला के कभी उसने मारनी नहीं है बट मुझे? नहीं आई चलाई डोंट ना. थिंक. 4 साल उसने नहीं चलाई. एंड देन ऑल्सो के something he said was very telling. Once they were like, you defend Putin. He's done war crimes. It's like, you think we haven't? You think we're so innocent? So America hasn't done war crimes. We've done war crimes. So places like North Korea, places like Russia, जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा में सालों साल आपने दुश्मन प्रॉप अप करके अमेरिकन पॉलिसीज जो रही हैं वाहियात सी, वो ट्रम्प जो हैं वो दीवारें completely गिरा देता है. ऑलमोस्ट दैट रशिया, यूएस. आई डोंट नो व्हाट ही विल डू विद चाइना. चल बता दो चाइना. व्हाट डू यू थिंक ट्रम्प्स चाइना पॉलिसी? हम अज्यूम करें ट्रम्प बन चुका है, बट व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद चाइना? I mean, I think China policy pe he will continue doing what Biden has done, and Biden continue doing what Trump has. And let's be very honest about this as well, right? Biden did do much to unwind the Trump tariffs on China, and in fact, the competition heated up even more under a Biden administration. I think it will continue to go down that path under regardless of which administration exists, because there's a consensus across the aisle within the national security establishment in Washington, D.C., within the business community, largely speaking, that you need to de-risk from China, not decouple, de-risk from China. That's the bare minimum. Now, some may say fully de-risk, decouple kar do, kuch kahenge nahi. There's carves things we need to carve out like climate, etc. Us pe China ka role hai. But both parties, Donald Trump or Kamala Harris or Joe Biden, agree on that. So I think that trend will continue. I think जो असल चीज मैं जिसे देख रहा हूँ, how I think about it from a geopolitical foreign policy standpoint, right, is that इस वक्त दो थिएटर्स जो हैं वो गर्म है दुनिया के अंदर, यूक्रेन का थिएटर और मिडल ईस्ट का थिएटर, ठीक है ना? अब चाइना का जो थिएटर है, ताइवान का जो थिएटर है, द कंसेंसस फॉर अ व्हाइल हैज बीन दैट Chinese are looking to significantly beef up capacity to get to a scenario by 2027 or through 2030 to be able to unify Taiwan. ट्रम्प That's विल the नॉट गिव reason. अबाउट इट. Correct. No, so I agree. So if you look at it from that point of view, that the Chinese are racing towards that, and the Americans are racing to prolong that timeline through economic actions, other military investments, etc. So AUKUS, etc. All of those are part of that framework. I think that will continue, even if Trump may not want to sort of go and defend China or defend Taiwan. He will continue to make those investments to try and find a way to deter China. Now, for the Chinese, if you look at it from their point of view, this is why the Ukrainian theater and the Middle Eastern theater matters. One, it matters because आपकी जो supply chain capability because you're supplying the Russians, for example, right now with help of the North Koreans and the Iranians as well. You not only develop the weapon systems, but you also get to test them in action. If you're China, you also see, okay, I want to see sort of the area denial, access denial capabilities that the Iranians are deploying against Israel, to see how the Americans would defend against that, because that's also the Chinese framework for cutting out Taiwan from the rest of the world in the event of a unification project. तो उस सिनेरियो के अंदर द डेंजर हियर, एंड दिस इज एग्नोस्टिक टू वेदर इट्स ट्रम्प और कामला, is that we are basically moving towards a third theater being opened up from a capabilities point of view, और वो capabilities develop की जा रही हैं और वो warming up हो रही है दुनिया के अंदर इस वक्त. And I think उस situation के अंदर my personal opinion is that an erratic president in the White House who's kind of like never know what you're going to do, and he could start or not start a war. He loves to, drive a hard bargain if you want to give him that point. It puts us in a very dangerous
पोजीशन, और ये मैंने अपने आर्टिकल में भी आर्ग्यू किया कि अगर आप पाकिस्तान हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ईरान का मामला हीट अप और हो जाता है तो उसका डायरेक्ट ब्लो बैक यू नो वो पाकिस्तान पे किसको आता आप है। एडवाइस कर रहे हैं? वो तो आपकी ये बात सुनकर इस वक्त सब इस्लामाबाद पिंडी में दुआएं मांग रहे हैं कि ट्रम्प आ जाए, भले खान बाहर आ पैसे जाए। आ जाए और ईरान से तो अल्लाह ना जंग करे शुरू ऐसा करो। हो यार। इन इन ताइवान केस दो, जो आप बात कर रहे हैं एराटिक बिहेवियर की, इफ एनीथिंग इट्स जस्ट बेटर अगर ट्रम्प प्रेसिडेंसी हो, बिकॉज इट बी क्लियर for all of their posturing, for all of their Hillary Clinton, John Kerry's talking about Taiwan, going there, it will end up being like Obama in Syria. It will end up being like Biden in Palestine. कि हर हफ्ते आके आप बोलते हो ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है, फिर रेड लाइन क्रॉस होती है, लाइक नहीं अब आगे बढ़ा देते हैं रेड लाइन. If reunification happens, do you think America will militarily send in the Pacific Fleet? मुश्किल. Probably not, but see, probably not, and इकोनॉमिकली but बोलेंगे इस ना. पे इकोनॉमिकली एक्शन करेंगे, प्लस इसके अंदर अगेन दिस इज द पॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द यूक्रेन साइड मेक, राइट, ऑफ अमेरिकन एंड वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन, लाइक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ financial and material cost point of view, the Ukraine, prolonging the Ukraine conflict is very cheap for the West, right? All you're doing is beefing up your supply chains, which you need to beef up in any case. मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी किसी से बात हो रही थी इस इशू पे। अमेरिका ने जो आर्मर्ड व्हीकल्स भेजी हैं यूक्रेन के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, वो आर्मर्ड व्हीकल्स गल्फ वॉर एरा के ज़माने की आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो एंड ऑफ लाइफ की तरफ आ रही थी। अब डीओडी ने अगेन डिप्रिसिएशन, हाउ यू मैनेज व्हीकल्स ईटीसी, एंड ऑफ लाइफ पे नहीं, तो यू हैड टू इशू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इन एनी केस, राइट, टू गेट न्यू वंस इन फ्रॉम जीएम और वट। तो अमेरिका ने क्या किया, अच्छा यूक्रेन की जंग छिड़ गई है, ये व्हीकल्स हमें वैसे ही एंड ऑफ लाइफ पर है, नहीं लेनी थी, तो वो जो आपको खर्चा नजर आता है यूक्रेन वॉर का टुवर्ड्स न्यू आर्मर्ड व्हीकल्स, वो रिप्लेसमेंट्स हैं उन पुरानी व्हीकल्स की जो आपने यूक्रेन भेजी हैं जहां वो रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल में, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर्क्स। Yeah. तो अगर आप उस परस्पेक्टिव से देखो तो यूक्रेन इज अ relatively significantly cheaper conflict for the West to continue funding than it is for Russia to continue funding, because they're actively in it and the West is indirectly in it. The same applies in a case like Taiwan, for example, because you are indirectly in it. You can help an insurgency, you can take economic action, you can provide the material needed for the Taiwanese to have a long insurgency, which, by the way, the point I was getting at is this is exactly what happened to the United States in Afghanistan and Iraq. आपने आके इंडस्ट्रियलाइज आर्मी ने कॉन्कर तो कर ली जमीन, लेकिन इंसर्जेंसी के अंदर, एसिमेट्रिक वॉर के अंदर, कॉन्करिंग द लैंड इज नॉट एवरीथिंग, राइट? सो देन यू आर इन फॉर अ Yeah. लॉन्ग हॉल इंसर्जेंसी. What did America end up doing? Over 20 years, the army ended up spending over $2 trillion dollars and thousands of Yeah. people in casualties in a long insurgency. So in those environments, that's also the calculus, right? Like China can probably pull off the unification play 1.0, and the United States may not intervene in the way that many think. Maybe it would, maybe it wouldn't, but probably not. But it can fuel a long term insurgency to tie the Chinese down in that environment, which is where policy, really comes in about the relative cost and benefit of a particular choice you make. But in the war in Afghanistan, your Donald Trump's fields and your Dick Cheney's also made millions, and Lockheed Martin Correct. made millions, and Not just them, पूरा all का पूरा your. इकोसिस्टम हाँ. यहाँ पर, द जोक ओवर हियर, इन वाशिंगटन, इसके वो जो पूरा नेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था अफगानिस्तान और इराक का, वो अगर आप गूगल सर्च लिमिट करें, इंस्टीट्यूशंस के नाम वही रखें और उनकी इवेंट्स और उनकी फंडिंग स्ट्रीम्स देखें 2001 से लेके 2008, 12, 14, 15 तक, तो वो सारी इराक अफगानिस्तान फोकस्ड होंगी। और अगर आप 2020 से लेके अभी तक का उसी ऑर्गेनाइजेशन का देखें मेकअप और कॉन्वर्जेशंस और फंडिंग आ रही हो, सारी यूक्रेन की है। तो वो जो नेशन बिल्डिंग, हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तो बात करते हैं, लेकिन एक पूरा नेशन बिल्डिंग कोट एंड कोट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर अच्छे खासे पैसे बनते हैं लोगों के, बने और अब यूक्रेन में बन रहे हैं, पहले अफगानिस्तान इराक में बने थे। So, if we are to summarize, पाकिस्तान को कोई खासा फर्क नहीं पड़ना. आई थिंक खासा फर्क ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल पर नहीं पड़ना। अगेन द कोर अमेरिकन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान आर टू, एंड देयर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है उनका,
एक है काउंटर टेरर, जिसकी सेलियंस और बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइक हुथीज वॉर हेड्स ईटीसी, और ईरान का रोल पाकिस्तान के अंदर, उस पर पाकिस्तान में बात नहीं होती इतनी खुल के इन टर्म्स ऑफ हाउ दे रिक्रूट, have been recruiting for the proxy war in Syria, for example, but also increasingly so with Hezbollah. So that's priority number one. And priority number two is strategic stability, which broadly in layman's term is basically आपका nuclear missile development program. उसको secure रखना और उसको manage करना, तो ये दो priorities हैं. इन दोनों priorities का driver, regardless of administration, they will know is the Pakistani military. Number एक. So the structural driver है doesn't change regardless of administration. You will have to talk to via CENTCOM to the Pakistani army, via DOD and Langley to the Pakistani military establishment. That doesn't change whether it's Trump or Kamala. What can change on the margins is that a Donald Trump may not care too much about democracy and rule of law. He empowers global authoritarians in any case. We've seen it in his first term. So it actually gives the military establishment a lot more room to maneuver because that facade is also gone of like human rights and rule of law on the DC side. And he's more transactional. So if he's more transactional, then what is it that the Pakistanis can offer on questions that you raise, like Iran, which can make a deal happen much more easily with the Trump administration. On the Harris administration side, the two things that on the margins that are important and will continue to improve for Pakistan is that the Democrats are much more focused on climate change. So financing for climate, the green initiative that the embassy and Pakistani American program already has been talking about for the last few years, that will go further in terms of investments into climate resilience, agriculture, infrastructure, etc. नंबर एक. और नंबर दो के जो आपका एक डेमोक्रेट्स का फोकस रहा है in terms of like strengthening democracy, as hollow as that might be, it still gives some level of civil society coverage in Pakistan to the fact that you can call out those things with somebody like Mr. Miller at the State Department, right? Ryan Grimm can continue to ask Miller time and time again कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, पाकिस्तान के बारे में आपका ख्याल है. आपको लगता है कि वो रायन ग्रिम ये सवाल कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन के साथ? ऑफ कोर्स नॉट. वो कहेगा इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस, शट अप, मूव ऑन, राइट? एंड दैट्स इट. So I think those are the margins, but fundamentally, Pakistani military is the main interlocutor of the relationship, whether we like it or not. अच्छा, इसके अंदर एक बात, and we can have a longer conversation if you want on this point as well. But the pushback I get when I say this, right, is that the Pakistani army will remain the central interlocutor in the relationship is that you're pro-establishment. People need to understand that my role, my goal, my function in what I do day to day is to be an analyst. As an analyst, it doesn't matter what I like or don't like. My goal is to explain what is going on and why it's happening in the way it is. And that's the reality. So it's not like me saying that the Pakistani establishment is the core interlocutor in the relationship means I support that. No, I would rather have a much wider bilateral relationship that is anchored around civilians and human rights and rule of law. But मेरी चाहने से कुछ नहीं होता, जो reality है वो यही है. हाँ, गलत लोग बोलते हैं यूर नॉट प्रो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, यू एक्चुअली प्रो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट. तुम तो गलत लोगों ने सही है. पहचान लिया कि आपके तो फूड्स पाकिस्तानी अंकल ज्यादा टॉम, अच्छे हैं. एज दे से ज्यादा एक्स पे जो कहते हैं, आप पाकिस्तानी अंकल टॉम है. नहीं नहीं पाए. इतने अकलमंद थोड़ी है पाकिस्तानी अंकल टॉम. इतनी स्पेसिफिक रेफरेंस कहाँ से आएगी? मतलब अमेरिका हुती से तंग है और हम यू. चलें वो बात छोड़ दें. इसमें जो अभी 1,500 डॉलर खर्च हुए हैं लॉबिंग पे, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी इमेज बेहतर कर रही है. ये जो इपरी वाली की जो तुम हाँ. बात कर रहे हो, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि आपका जो फ्रंट है वो एक नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का थिंक टैंक है, जो कि पैसे दे रहा है $1.5 मिलियन, माशाल्लाह 6 लाख डॉलर माशाल्लाह. ऑलरेडी पे कर चुके हैं. अच्छा, अब उसके अंदर ये बड़ी मुझे अजीब सी चीज़ लगी कि जो स्टीवन पेन साहब हैं, वो कुछ महीनों पहले पीटीआई के लॉबीइस्ट थे. पीटीआई ने उनको पैसे दिए थे. उससे पहले उनका एक रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशर्रफ के ज़माने तक से लेके. और उनकी एक तकरीर मौजूद है 2 साल पहले की या 2.5 साल पहले की यूट्यूब पर. अगर आप गूगल यूट्यूब में डालें स्टीवन पेन
Friends of Democracy of Pakistan or something, that speech will come up. It was, I think, in Texas, जहां फ्रंट टेबल पर सजाद बरकी साहब बैठे हैं पीटीआई के। तो एक लेक्चर दिया जा रहा था स्टीवन पेन की तरफ से रिलेशनशिप के बारे में, जहां वो बताते हैं कि किस तरह उनकी रिलेशनशिप बनी मुशर्रफ के साथ और पाकिस्तान के टाइज वगैरह वगैरह। सो ही एक्सप्लेन्स हिज बैकग्राउंड इन द पाकिस्तान स्पेस। सो स्टीवन पेन, मुशर्रफ का लॉबीइस्ट, देन becomes PTI's lobbyist, then now is again the IPRI's lobbyist hired by IPRI, अमेरिका का right? फवाद चौधरी है। तो वो उधर हैं। और उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक कंपनी है हाइपर फोकल कम्युनिकेशंस। हाइपर फोकल कम्युनिकेशंस के जो लीडर हैं जो इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं थ्रू इपरी, वो डोनाल्ड ट्रंप और उससे पहले कोक फाउंडेशन के सर्कल में रह चुके हैं। इनर सर्कल में नहीं बट लूसली सर्कल में रह चुके हैं। उनके कोई कैंपेन भी वो चलाते थे एजुकेशन फ्रीडम के ऊपर, विच इज़ अ बिग राइट विंग का एक टॉपिक रहा है अमेरिका के अंदर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर है जिसको $6 लाख दिए गए हैं, और उसका जो एक आउटपुट अभी तक जो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कर्सरी तौर पे निकला है, वो एक सेंटकॉम के एक मैगजीन में एक जनरल हम्म। मुनीर का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $1.5 मिलियन का है, और उसमें से $6 लाख जो हैं वो पे हो चुके हैं। ये कोई फायदा भी होता है? पीटीआई ने इतने साल, अभी 2 साल लॉबिंग करके पैसे खर्च किए, अब हम लोग भी कर रहे हैं। ये जो डीसी में पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा उड़ रहा है इन फाइटिंग दिस पीआर जंग, इसका कोई टेंजिबल फायदा है या बस ये सिर्फ अखबारों और सुर्खियों में आने के ही हद तक है? इट्स नॉइज। आई मीन सी, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट अगर आपने एटलीस्ट फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू देखना हो ना, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपने अगर मेजर करना है तो यू वुड हैव टू सी कि अच्छा ब्रॉडर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस टॉपिक पे बात हुई है कि नहीं हुई जो आप करना चाह रहे हैं, वट एवर हम्म। टॉपिक दैट माइट बी। या किसी बड़े इदारे में जो कि फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है एजेंसी में, थिंक टैंक कम्युनिटी में या रिसर्च कम्युनिटी में, क्या उस पे कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको कि नहीं। बियॉन्ड दैट इज जस्ट मार्केटिंग मनी। You can keep spending it. What I tell members of the diaspora a lot of times is that if the product is crap, it doesn't matter whether you spend a million or 5 million or $20 million on it, the product isn't going to sell. It's just a waste of money. And if the product is good, like if you're making a really good Tesla car, Tesla doesn't spend a dime on marketing. They don't need to because the product sells itself, for example, right? बिकॉज दे स्पेंड ऑन Um, इलॉन मस्क मार्केटिंग, बिकॉज ही इज द Elon ब्रांड। Musk is the brand. He's या the या brand. Exactly. या Right. So, in that sense, you can spend all of this money that you want, but structurally speaking, क्या हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी या सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी या वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के बारे में कोई perspective है जो कि बड़ा strategic perspective है? The answer to that is no. In fact, the last national security strategy document published by the United States of America by the Biden administration doesn't mention Pakistan once. So there you have it. There's no real strategic interest. The only strategic interest, if you were to define it that way, is कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के मामलात में हमारे साथ कोऑपरेट करता रहे, और किसी तरह पाकिस्तान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इतना आगे नहीं बढ़ जाए जहां वो ब्रॉडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी वाली कॉन्वर्जेशन में हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अंडरमाइन ना करे। दैट्स अबाउट इट। और हमारे पड़ोसी मुल्क, उनको कोई फर्क पड़ेगा? इस बात से, इस पैसे की स्पेंडिंग से नहीं, हमारी स्पेंडिंग से क्या ही फर्क पड़ना है उनको। हम वो उनकी तो खुद आईपीएल, स्पेंड ही नहीं। सो हमारे सो सी दिस इज द इकॉन एग्जांपल, राइट? हमारी इकोनॉमी से ज्यादा अंबानी ने अपनी शादी पे लगा दिया, हमारी spending से क्या फर्क पड़ेगा यार? अमेरिकन इलेक्शन से इंडिया को क्या फर्क पड़ना है? हाँ अच्छा, ये वाला अच्छा। उसके अंदर एक पॉइंट कंपैरेटिवली, राइट, हम मार्केटिंग स्पेंड की बात कर रहे थे, तो इफ यू गो टू द फारा वेबसाइट एंड यू पुट इंडिया एज द फिल्टर, वो कुछ स्पेंड नहीं करते। अगेन, प्रोडक्ट दैट इज डिमांडेड एंड इज इन नीड डजंट नीड टू स्पेंड दैट मनी। सो दैट वाज वन पॉइंट ऑन द इलेक्शंस। बाय एंड लार्ज द रिलेशनशिप विद इंडिया विल कंटिन्यू टू डीपन। अगेन, मार्जिन्स पे दो इश्यूज हैं जो कि कैन प्ले आउट ईदर विच वे। On the Republican side, if Donald Trump is president, then the tariffs issue
could impact Indian products and Indian exports quite a bit because it's a big market for them. And again, that could impact Pakistan as well, by the way, because it's the biggest bilateral export market from for Pakistan. अगर अमेरिका टैरिफ पॉलिसी में वो करता है जो डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ट्रेल पे कह रहे हैं, तो उसका दोनों ममालिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा. चाइना पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट एनी एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स विल फील दैट वॉलेटिलिटी. और दूसरा इशू जो बिलखसूस इंडियन इंडियन को पड़ेगा और इंडियन पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक मसला बन सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इमिग्रेशन है. In particular, deportation है. If you look at the southern border data in terms of people who are being arrested, non-Latinos के अंदर Indians are right up there in terms of illegal entrants from the southern border, right? तो अगर क्रैकडाउन होता है तो वो क्रैकडाउन का इम्पैक्ट भी दिल्ली वाशिंगटन रिलेशनशिप पे पड़ेगा, because it becomes about humans and constituents and people at that point in time, and so even India would have to respond to that. Kamala Harris ki side pe, if you then look at the flip side of it, something like, let's say, the ongoing case in the DOJ about the murder for hire plot, जो Canada की relationship को already destroy कर चुका है, India Canada की relationship को to an extent. वो अमेरिका में भी similar case चल रहा है. Does a left of center, more prosecutorial White House under a Kamala Harris take a different point of view in that? We don't know, but that's one thing. बाइडन Probably ने क्या not. किया जमाल खशोगी पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता. तो उस पे वो इशू बट हो सकता है, keep an eye on, right? If you were to keep monitor that situation. And then secondly, you would look at some of the things around climate cooperation जो कि deepen होगी between India and the United States under a Harris administration, because again जो excess capacity है दुनिया में इस वक्त solar की, electric vehicle batteries की, ETC, वो सब चाइना में है. और अगर अमेरिका ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है तो वो व्यू चाइना के लेंस से भी देखा जा रहा है, और उसके अंदर इंडिया ऑब्वियसली हैज एन अपॉर्चुनिटी to play as an alternative jurisdiction, as does Mexico. And you said the Indian American vote swings Republican. No, the Indian American vote swings Democrat. Democrat, much like the rest of the Asian American Pacific. API community कहते हैं in the broader spectrum. Asian American Pacific Islanders, that's like Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Vietnamese, etc. Broadly speaking, the entire API cohort is about 60% Democrat in favor of Kamala Harris. और जो लेटेस्ट कार्नेगी का अपना एक पोल आया है ऑन इंडियंस अमेरिकन स्पेसिफिकली, मिलन वैष्णव ने उसको पब्लिश किया कल, ही ट्वीटेड अबाउट दिस एज वेल. द रिपोर्ट इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन who wants to look at it. That says that Indian Americans as an individual cohort out of the API community also are about 61% Kamala. They were about 67 or 68%, if I remember correctly, for Biden in 2020. कमला खुद 61% इंडियन नहीं है यार. 61% इंडियन उनको मिल रहा है. कुछ लोकल पॉलिटिक्स पे है जिसपे आप कोई अपनी राय देना चाहेंगे? पाकिस्तान पे हाँ. I wrote about this on the Pakistani Substack yesterday, क्योंकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने कहा लिख भी देते हैं इसके बारे में कि मेरा फ्रेमवर्क क्या. आई थिंक वी एंटर्ड दिस पीरियड ऑफ लाइक अ लल पीरियड इन पाकिस्तान. I अल्लाह refer का to it in शुक्र. my article. अल्लाह आमीन सुम आमीन. So I refer to it as stable instability, where I didn't know how to write this. It's easier to say this, right? कि अगर आप किसी टेबल कुर्सी पे बैठे हैं और वो पीछे लीन करके आप एक टांग पे उसके बैठे हुए हो, तो आप स्टेबल हैं लेकिन इनस्टेबल. हल्का सा बीच करेंगे तो पीछे लग सकता है और कंकशन हो सकती है. पेपर डाल के एक जो हमने टेबल स्टेबल करते हैं हम. हाँ. तो पत्थर ये वो डालकर एक. वाली स्टेबिलिटी है. और उसका फ्रेमवर्क, अगेन शजा, आई थिंक यू विल एग्री विद दिस, इज के अमेंडमेंट हो गई 26वीं, चीफ जस्टिस की सक्सेशन हो गई. बोथ प्रोसेसेस वेंट स्मूथली इन द वे द हाइब्रिड एस्टैब्लिशमेंट रेजीम वांटेड इट टू गो, हाउएवर यू डिफाइन इट. अब क्योंकि वो हो गया है, और इस सिस्टम के अंदर 5 की कैरेक्टर्स हैं, 3 कोर कैरेक्टर्स हैं. 3 कोर कौन है? चीफ ऑफ आर्मी, डीजीआई, जो एक तरह से काम करते हैं. डीजीआई की भी सक्सेशन हो गई, और वजीर आजम साहब वो सबसर्विएंट हैं दोनों की इस टाइम पीरियड के अंदर, जो कि खान साहब के अंदर भी था. और जो 2 अलग कैरेक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिस्टम को, चीफ जस्टिस साहब इन अ बिग वे, and the president because of his affiliation with the People's Party and the role the People's Party has been playing in a lot of these constitutional type things. चीफ जस्टिस साहब के पावर्स क्लिप कर दिए गए हैं.
और वो नए आए हैं, वो प्रोसेस भी हो हम्म। गया। तो अब अगर मैं उस फ्रेमवर्क से एनालाइज कर रहा था डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान में, तो अगर ये फ्रेमवर्क होल्ड करता है, तो जो तीन लोग हैं वो सेम पेज पर हैं, कोट एंड कोट अभी। हम्म। There's nothing on the horizon that we can say is going to rock that boat for the time being. और जो अगली ओपनिंग अब आती है इस टाइमलाइन के अंदर, राइट, व्हाई आई रेफर टू दिस एज द एज स्टेबल इंस्टेबिलिटी, इज द क्वेश्चन ऑफ नव- द एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी नवंबर। चीफ नेक्स्ट नवंबर। या। राइट, तो अब हम अक्टूबर, 12 महीने बाकी हैं उस प्रोसेस हम्म। में। तो अगर हम कहें कि अच्छा वो प्रोसेस की कॉन्वर्जेशन जो है वो अगले 6 महीने बाद स्टार्ट होगी, तो अगले 6 महीने तक तो क्या होना, आईएमएफ भी है, इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, रिजर्व्स भी ऊपर हैं, एक्सपोर्ट्स भी ऊपर हैं, रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी रिकॉर्ड अमाउंट में भेज रहे हैं। तो अब और खान साहब का भी ऐसे ही लग रहा है कि किसी ना किसी तरह डील हो चुकी है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा इज आउट, और थोड़े बहुत जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज, उनको रिलीफ मिल रहा है। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग वेदर इट्स अ डील और नॉट, आई डोंट नो, बट दीज थिंग्स डोंट इट्स हैपन मैजिकली इन यस। पाकिस्तान, राइट, जादू से नहीं होती। तो अगर मैं उस पूरे फ्रेमवर्क को देखूं तो आई एम लाइक, अच्छा भाई, फॉर द टाइम बीइंग बारिंग एनी अनफोर्सीन इवेंट, और जो मैंने अपने उसमें लिखी भी हैं कि क्या हो सकता है, तीन सिनेरियोज, बेस केस ये है कि वी आर इन फॉर सम नियर टर्म स्टेबलाइजेशन इन पाकिस्तान। आई एग्री विथ यू। बुशरा बीबी जादू से तो नहीं बाहर है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग से हुआ होगा। साथ ही साथ लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक जाता है, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज मेरी रीड तो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज अ होल की इस वक्त एपेटाइट फॉर इमरान खान इज जीरो। या, आई वुड टेंड टू अग्री, राइट, एंड आई वुड से अच्छा, हो सकता है जीरो ना हो सकता है एक एक स्पेस हो जो ओपन आप कर सकते हैं अपने लिए बाय प्लेइंग अलोंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वे दे डिड, व्हिच आई एम लाइक, एज एन एनालिस्ट आई एम लाइक, दिस वाज, यू कुड हैव डन बेटर बाय वोटिंग फॉर इट, बट यू सॉर्ट ऑफ गॉट more than, you did quite a bit to help them out over there by sort of playing along in the process. I think जो सबसे बड़ा इस वक्त इनका एज अ पार्टी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपसेट करता है ना, वो ये कांस्टेंट इंटरनेशनलाइजेशन है इशू का। जब आप लंदन में प्रोटेस्ट करते हैं, जब आप अमेरिका में लेटर्स साइन करवाते हैं, आप सैंक्शंस की बात करते हैं अगेंस्ट आर्मी जनरल्स एसेट्रा, तो वो बॉदर करता है एस्टेब्लिशमेंट को फॉर श्योर। And that's where that reaction also comes in, कि you are anti-Pakistan as the establishment would frame it. So I think that overseas versus domestic constituency politics is a big problem for the PTI. I think nobody but Imran Khan can manage that if he were to be out of jail. और उसका एक इम्प्लीकेशन जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो ये कि ये ओवरसीज ग्रुप्स जो हैं वो अपने ही लीडर्स की, जो पाकिस्तान में बड़ी रिप्रेशन फेस कर रहे हैं, बड़े टफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद भी खड़े हैं, वेदर वी अग्री विद देम और नॉट डज नॉट मैटर इन माय व्यू, बट देर फेसिंग इमेंस प्रेशर। आप उनके अगेंस्ट ही कैंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया पर, and that to me is like, why are you guys fighting this way internally? Like, you may not like Gandapur, or you may not like Salman Akram Raja, or you may not like XYZ people in your party, but they're there on the ground, यार, और वो रोज डील कर रहे हैं इस इशू से, और आप बाहर बैठ के कहते हैं कि वो गद्दार है और वो मिला हुआ है अंदर से और उसने कुछ कर दिया। I'm like, आप चले जाएं फिर वहां जाके आई कर थिंक लें देर इज काम अ खुद। सेंस इन पीटीआई that there might be a post Imran Khan PTI, and I think they're fighting for pieces. तो इन प्राइवेट कई लोगों को लगने लगा है कि वो इमरान खान है पीटीआई में। तो ये हो सकता है। ये वहम उनके टूटेंगे, बिकॉज देर इज नो पीटीआई अपार्ट फ्रॉम इमरान खान। तो ये सपोर्टर्स को भी फील होना शुरू हो जाता है कि यार हम आपके पीछे इसलिए, हम अली अमीन गंडापुर के कहने पे डी चौक इसलिए आए हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने बोला है कि खान को बाहर निकालूंगा। अगर तो वो वापस चला जाता है, फिर हम देखते हैं एससीओ पे भी कुछ नहीं करता, फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट भी चल रही है, फिर हम देखते हैं खान भी जेल में। तो जिस तरह की, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी वो वीडियो देखी है, आ, जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं पीटीआई सपोर्टर से, it's because they feel betrayed by Ali Amin Gandapur. या, but then Ansar Abbasi now is saying कि अली अमीन गंडापुर ने ही बुशरा बीबी को बाहर निकलवाया है। That's the idea ना कि भाई अली अमीन गंडापुर
दोनों को लेके चल रहा है। जो पीटीआई सपोर्टर्स को लगता है कि खान के साथ गद्दारी है, कि आप कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चल रहे हैं। कैसे अगर इमरान खान ने बोला कि एससीओ वाले दिन तक हम धरना देंगे और आप वापस आ गए ये बोल करके कुछ देर आने दो, या एससीओ वाले दिन पे आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये इमरान खान के साथ गद्दारी है। वेयर एज इमरान खान इज ट्राइंग टू, इमरान खान सॉरी एलिमिन गंडापुर इज मे बी ट्राइंग टू स्टे लॉयल टू द आइडिया ऑफ पीटीआई, कि भाई पार्टी भी सरवाइव करे, हम प्रोटेस्ट भी करें, हम कर भी दें, पर स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी कर सकें। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट इमरान खान की डिक्शनरी में नहीं है ना, तो वो फिर उनके सपोर्टर्स या भी उसको गद्दारी समझते हैं। या नो, दैट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट, बट उसके अंदर भी अल्टीमेटली Gandapur, if you were then to play this out and given the developments of this week, right, you would say कि उसकी स्ट्रैटेजी बेहतर है और कि वो स्पेस भी क्रिएट कर रहा है, उसने खैबर पख्तूनख्वा भी चलाना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लीडर के करीब लोगों को आ, छुट रिहाई भी दिलवा रहा है बाय एंगेजिंग एंड बाय प्लेइंग दिस अलोंग. इज दिस इज द सेफ्टी दैट इमरान खान हैड अराउंड हिम, with people like परवेज इलाही, with people like शाह महमूद या कुरैशी, with people like फवाद चौधरी, जो 2 साल से यही सर मार रहे थे, सीनियर पीटीआई लीडर्स इन प्राइवेट। जराए बताते हैं, मेरे खुद के एक पर्सनल जराए हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि वो गालियां देते हुए पाए गए थे कि भाई तूने पूरी कश्ती ही डुबा दी खान ने, क्या मतलब, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करके चल लेते। सो या व्हाट अली मीन गंडापुर इज डूइंग इज स्मार्ट, बट इज दैट व्हाट इमरान खान वांट्स? नो। तो मेरा जो तो आप, अपना पर्सनल व्यू था कि जब अमेंडमेंट टेबल हुई तो पीटीआई को वोट भी डाल देना चाहिए था. पूरा ड्राफ्ट तो आपने बना के दिया है और वो टेबल हुआ है, जो वो पूरा ड्राफ्ट ही आपका है, और आपको नहीं, आपकी आप सियासत एग्रीमेंट थी. समझते ही नहीं हो। तो आप नहीं, उजैर मैं कह रहा हूँ सियासत वोट को, भी डाल देते और आपका बंदा भी, लीडर भी बाहर आ जाता उस नतीजे के अंदर. नहीं आप लीडर तो नहीं बाहर आ रहे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बाहर आ सकते थे। वो तो अब हाँ. सबको ही पता है, मेरे ख्याल से पीटीआई को भी समझ आ गई है कि कुरैशी साहब कुछ रोल अदा कर सकते हैं इस पार्टी में। डोंट यू थिंक दे लेफ्ट गेन्स ऑन द टेबल बाय नॉट वोटिंग फॉर इट एट द एंड ऑफ इट, जब सब कुछ मिल गया व्हाट उसके बाद गेम्स? भी. यार मैं बहुत टेलिंग आपको बताता हूँ कि मिफ्ता हम्म. इस्माइल जब आए हुए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोला कि एफआईए या अटर्नी जनरल थे, मेरे ख्याल से मैं भूल गया, या तो मैंने एफआईए बोला था, उन्होंने करेक्ट करके अटर्नी जनरल किया था मुझे, तो वो इमरान खान के पास गए थे और उन्होंने बोला भाई असदुल हक मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी के तो खिलाफ कोई केस है ही नहीं। तो मतलब ये खत्म करिए, फालतू का आपने किया हुआ है। मैंने इमरान खान से समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ मैंने खत्म कर दिया तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने पाकिस्तान, आज इमरान खान की ट्वीट हुई है विच विकी लीक्स हैज रीट्वीटेड, सो इम्पैक्ट तो है, जिस तरह आप कह रहे हैं प्रोडक्ट तो सॉलिड है। जो वो एक आइडिया है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियाद तोड़ दी इन लोगों ने, इन गद्दारों ने, और हम खड़े हुए थे उसके खिलाफ, ये तारीख में लिखा जाएगा। रातों को मीटिंग करके हमने ड्राफ्ट बनाया, हमने आपसे अग्री किया कि हम पास होने देंगे, विल लुक दी अदर वे, वो नहीं मैटर करेगा। कल को खान वापस आएगा तो वो, और वो रिवर्स भी नहीं करेंगे अगर वो पावर में आ गए। बट राइट नाउ फॉर द फर्टाइल माइंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे साइन करना वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर पीटीआई। Yeah, that's one way to look at it. ऑप्टिक्स देखो ना I यार would आप। just, I agree. I understand that. It's about it's being hostage. So this is an interesting point you reminded me of, right? कि मैंने जब लास्ट वीक पॉडकास्ट की नयरा हक के साथ, चीज़ें डेमोक्रेट, ओपन डेमोक्रेट दिखती हैं, होस्ट शो करती हैं, काम भी कर चुकी हैं सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर. शी वॉज वेरी ब्लंट, शी रेफर्ड टू द अंकल्स सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प एज फकिंग इडियट्स. अब उस पे मैं जिन अंकल्स को जानता हूँ वो बड़े गर्म हो गए मुझ पे कि तुमने पाकिस्तानी अंकल्स। कैसे बन. हाँ, पाकिस्तानी अमेरिकन अंकल्स ना. um, एक ने फोन की, एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हेट यू वर गेटिंग एट अबाउट द नैरेटिव. उन्होंने कहा, मैंने एडवाइस नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आई एडवाइज यू एज एल्डर कि जो लोग हैं ना वो उन्हीं चीज़ों को सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद हों.
ऐसा ही है। और आपका जो वीलॉग है, मैंने कहा सर मेरा पॉडकास्ट है, वीलॉग नहीं है, बट चलें ठीक है। आपका जो वीलॉग है वो जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वो करें आप, लेकिन ऑडियंस को भी, वरना आपकी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी। एंड आई टू एक्सप्लेन टू हिम कि आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ क्यूरेटिंग अ लार्ज ऑडियंस, आई डोंट मेक, the intent is not to make money, the intent is to have conversations with people, and whether I agree with them or not, it's supposed to be less for the eyeballs and more for a genuine conversation. And your point reminded me of that, कि हाँ वो पूरा जो strategy है पार्टी की, उसकी positioning है, उसकी ideology है, the future orientation है, वो hijacked है to the हम्म। eyeballs essentially. लोग इमरान खान को इडियट समझते हैं। आई थिंक इमरान खान की मीडिया हैंडलिंग, हाउ थिंग्स विल प्ले आउट, हाउ नैरेटिव्स आर सेट, फिनोमिनल यार, फिनोमिनल। मतलब एज अ कम्युनिकेशंस स्टूडेंट कह लें मुझे, मैं एक पूरी वीडियो बनाना चाहता हूँ, एक लेक्चर देना चाहता हूँ कि पीटीआई की कम्युनिकेशन इतनी सॉलिड क्यों है। आप उनकी हर ट्वीट देखें, एक ट्वीट उनकी 2 साल में नहीं मिलेगी जिसमें वो गवर्नमेंट कहते हैं। This Form 47 government, they make sure illegal abduction of इमरान खान। जो वो फ्रेमिंग और रेपिटेशन ऑफ फ्रेमिंग है, वो जो नेवर कंसीडिंग डिफीट है, वो इज फिनोमिनल। तो वो जो मीडिया नैरेटिव सेट है, बिकॉज पीटीआई इतना धांधली धांधली करती है। आज पीटीआई के सपोर्टर्स मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि अच्छा 2018 में धांधली हुई, लेकिन इसलिए हुई कि पीटीआई की सीटें कम की, वरना तो या ये दो। मेन स्ट्रीम व्यू है, ये मेन स्ट्रीम व्यू है पीटीआई इकोसिस्टम के अंदर, हमसे तो चुराई गई सीटें 18 में। तो आप अगर, जिसको हम यूथ वर्स कहते हैं, अगर आप इतने डीप हो उसमें, ये इसलिए है बिकॉज द सेम मैसेज हैज बीन रिपीटेड, हैमर्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, टू द एक्सटेंट वेयर इमरान खान इज ओपनली एडमिटेड कि यार सुपर किंग बाजवा था, मैं सामने था। पीटी कहेंगे ना उसको, क्या कहेंगे कि ऑर्डर्स अबव से आते थे, काजी फैजी सा को रेफरेंस अबव ऑर्डर आए तो कौन है आपके अबव, क्यों है आपके आगे? खुल्लम खुल्ला मान रहे हैं कि हम मिलिट्री रिजीम के फ्रंटमैन थे। फिर भी इन द पीटीआई टाइमलाइन 2013 उनसे छीना गया, 2018 में उनकी सीटें कम की गई, और फिर 2022 में अमेरिका के कहने पे हटाने पे फिर 2024 उनसे छीना गया। ऑलवेज द लेजिस्लेटिव विक्टिम। कू किया गया 2022 में, इट्स लेजिस्लेटिव कू। ऑल्सो समथिंग इमरान खान इज बैक, लाइक बैक ट्रैक्ड फ्रॉम। वो मेहदी हसन का इंटरव्यू हो, वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ। दिस इज व्हाई इमरान खान विल नेवर कम आउट एंड से कि हाँ यार वो मैंने झूठ बोला था या सियासत थी। They don't do retreat, they don't do conceding defeat. This is why all the PTI narrative is रातों को वो भीख मांगने आए हैं डील की, इमरान खान ने मना किया, इमरान खान ने 4 दफा। अभी भी in the minds of PTI and people who follow PTI vloggers, everything is being controlled by Imran Khan, and the system, not just the local, the international system is coming to beg to Imran Khan कि यार अमेरिकन इलेक्शन होने दो, एक हफ्ता कुछ ना करो। तो मतलब क्या इनसे कोई आर्ग्यू कर सके? तो ये जो नैरेटिव बनाया है, ये जो फर्टाइल माइंड्स में प्रोपेगेंडा, इट्स सलाम है। इट्स फिनोमिनली वेल डन। बट दैट डू यू ऑल्सो, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, राइट? अगर एक सवाल फॉलो अप बनता है वो ये कि एक होता है कि आप माइंड शेप कर रहे होते हो प्रोएक्टिवली, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में फॉर एग्जांपल कश्मीर की जिहाद पे पूरा एक माइंड सेट बनाया ना, और फिर वो सेल्फ रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म बन जाता है नेक्स्ट लेयर में, आपके करने के बावजूद, ना करने के बावजूद वो इसकी अपनी एक जिंदगी होती है, और उसके थर्ड स्टेज में वो डोमिनेट करता है आपको as a entity, right? So if I were to extend the Pakistan establishment, कश्मीर जिहाद और जिहाद एज अ नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पहले आपने उसको पुश किया माइंड के अंदर, तंजीमें बनाई, उसका एडवांटेज लिया, 90s के अंदर आके उसने अपनी एक ज़िंदगी पकड़ना शुरू की, और 9/11 के बाद आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो आप पे हावी हो गया until the end when you had to go into वजीरिस्तान एंड स्वात ईटीसी, और वो आज तक आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि कैजुअलिटी रेट्स आर अप 50% अगेन. Is that what's also, I would curious to hear your thoughts, happening with the PTI, कि पहले आपने शेप किया माइंड को, आई थिंक कि अब हम उस फेज में हैं जहाँ वो एक सेल्फ री इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बन चुका है पूरे इकोसिस्टम के अंदर,
और थर्ड फेज होगा कि वो जिस तरह रोब्सपियर को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही टंगा गिलोटीन के साथ उसकी गर्दन काटी थी, वो नेक्स्ट फेज है इस मूवमेंट का। मुश्किल लगता है यार, बिकॉज वो मास, आई थिंक इवन अगर पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है, सड़कों पे तो कोई नहीं आ रहा जितनी दफा इन लोगों ने नहीं, कोशिश आई करी डोंट है। मीन लिटरली, राइट, मैं अच्छा, लिटरली वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड हाउ द पार्टी फंक्शंस, राइट, कि अब वो पार्टी का अपना एक इकोसिस्टम इस तरह बन गया है कि मेरे नज़दीक आप उसको अब कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन इफ एज द सेंट्रल पार्टी यू ट्राई टू डू यार एनीथिंग इट्स अबाउट इट। इट्स लाइक व्हेन यू गो टू डिज्नी वर्ल्ड एंड देयर लाइक दिस इज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। वो आपको कोई मर भी जाए डिज्नी वर्ल्ड में तो वो नहीं दिखा सकते, दे हैव टू पुट अप द फसाड। सो वो जो सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ मीडिया मैसेजिंग है पीटीआई के, वो इतने इंट्रेंच्ड हैं और वो इतने परफेक्टली रिपीटेडली किए जाते हैं कि ऑफ कोर्स वो परपेचुएट अब खुद हो रहे हैं। कि आप प्रिंसिपली नहीं आर्ग्यू करते, आप लीगली नहीं आर्ग्यू करते, अगर तो कोई कुछ हो एंड आई एम लाइक अच्छा इमरान खान ने ये किया था, द आर्ग्यूमेंट इज नॉट कि इमरान खान ने जो किया था वो सही था गलत है, द आइडिया इज इमरान खान इज गुड, ergo एनीथिंग ही डज इज गुड। 26वीं आईनी तरमीम, सारे पीटीआई सपोर्टर्स, उनसे अगर मैं सिर्फ इतना पूछ लूं, मेरे ख्याल से 99% को ये नहीं पता होगा कि 26वीं आईनी तरमीम में एग्जैक्टली है क्या। And if Imran Khan was doing it, they say it's the greatest thing in the world. So in terms of the establishment's narrative, वो थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया है ना, फिजन नहीं, कि एक एस्टेब्लिशमेंट ने जहन साजी कर दी कि सियासतदान सारे बुरे हैं, अयूब खान बेचारा मजबूर था, लोगों से ऐसे लिखवाए कि क्यों अयूब खान को मजबूरन कू करना पड़ा, क्योंकि सियासतदान ये थे वो थे। तो ऑलरेडी आपको पता है सियासतदान दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, पाकिस्तान तो सरखेज था और हम तो लीडिंग इकोनॉमी थे, और दो फैमिलीज ने आके तबाह कर दिया। तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने जो एक नैरेटिव बनाया, वो पहले मुशर्रफ की थोड़ी प्रोजेक्शन में काम आया, वो सारी मेहनत उन्होंने इमरान खान पे डाल दी। Or as they would say, we bet on the wrong horse. So they said all of the things that we've taught, all of the promises that we've made, that a Messiah will come who will save you. This is that guy now. Why that work is because also Imran Khan's personal charm. They must have tried it. मुस्तफ़ा कमाल को वापस लेकर आए, और बहुत सारे हैं, शाहिद अफरीदी, जवाद अहमद, इतने सारे सेलिब्रिटीज जो पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं सबकी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात हुई होगी। बट इमरान खान का पर्सनल चार्म, इमरान खान की पर्सनल ग्लोरी, वर्ल्ड कप विनिंग स्टोरी, शौकत खानम स्टोरी, साथ एक सेक्स अपील यार, मतलब एक जनरेशन grew up either wanting to be Imran Khan or wanting to be with Imran Khan. That's not just maybe one, they're like two generations. तो आपकी चाइल्डहुड के हीरो, आपका बेस्ट मोमेंट, कंबाइन दैट विद व्हाट यू बीन टॉट अबाउट पाकिस्तान, कि यार पाकिस्तान तो ये है वर्ल्ड कप विनिंग, और कौन उसको पहुंचा रहा है, इमरान खान। साथ ही साथ जो हमारा एक कॉलोनियल आइडिया ऑफ अ पाकिस्तानी मैन इज आल्सो सूड फूड दुनिया भर में जा रहा है, लड़के आ से जाए। तो आपकी एस्पिरेशंस, आपकी ड्रीम्स, साथ ही साथ आपका इस्लामिक टच, साथ ही साथ आपकी सारी हाँ, की फिर वो सारी मुसलमान भी पाकिस्तानियत। अच्छा बन गया। या ऑफ कोर्स, यार ही गेव दैट अप, लाइक व्हाई वाज जुनैद जमशेद पॉपुलर? ही कुड हैव बीन the greatest singer in the world. But at the height of his, even though it wasn't his height, but at the height of his popularity, he gave that up. So in terms of the eyes of Pakistanis, there are very little people who were more respected than Egyptians. So Imran Khan had all of that, did all of that, then came to religion, and now he's the Messiah that we've been waiting for. तो आपके जो इस्लाम में पढ़ाया जा रहा है वो भी उन्होंने को ऑप्ट कर लिया, जो पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जा रहा है वो भी को ऑप्ट कर लिया, आपके पर्सनल ड्रीम्स, पर्सनल एस्पिरेशंस भी को ऑप्ट कर ली, और सब वो एक इंसान में आ गया, और साथ ही साथ फिनोमिनल यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया टू रीइंफोर्स दैट। तो वो जो हाईजैक हुई है पूरी की पूरी साइकी, वो इस डेथली कॉम्बिनेशन की वजह से हुई थी। और इससे निकलना सबकी अपनी अपनी पर्सनल जर्नी है। But for a few या years, I think Imran Khan managed to fool everybody. If he या fooled me, he नो, fooled वी you. टॉक्ड So अबाउट दिस, yeah, आई वाज लिटरली, कल मुझे एक मैसेज आया, नॉट acquaintance, I've never met him, just messaged me on Twitter and then on WhatsApp,
So he is like, I read your articles and watch your podcast, etc. And I'm just trying to understand कि आप जो है तो मुझे 5 मिनट का वॉइस नोट भेजा and I was on a break, so I was listening to it कि आप क्यों उतना क्रिटिकल है ना खान साहब, तुम मुझे if you don't mind like just help me understand this, and he explained why, to your point, वही जो 90% of the things you just said, right, कि it was we didn't have people to look up to, World Cup winning champion, blah blah blah. That's how I got. So I responded to him. I was like, I've been there too, man. 2013 मैंने एक पार्टी के लिए अपनी जिंदगी में कैंपेन किया है पाकिस्तान के अंदर, वो पीटीआई है 13 के अंदर, और 14 में आई हैड अ वेक अप कॉल, और वो वेकअप कॉल बड़ी सिंपल थी कि जो डेविल था वो उससे डील करने के लिए राजी था, तो मेरे लिए पहली फॉलोइंग आउट यहाँ पे हो गई। दूसरी हो गई कि वो इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करता, और मैं ओवर टाइम became an institutionalist in that sense, in terms of institutions must evolve for people to move forward. And three, he's got the classic, and this is more recent post Trump, I would say, in my mind, authoritarian populist. And those are the three. Yeah, I explained that. And you're right. Like it's a personal journey for a lot of people. What I've noticed also, especially for people from Karachi who become rabid Imran Khan fans, some of them are my friends, मैं उनसे मजाक भी करता हूँ कि आपने जो है वो अल्ताफ भाई को अबैंडन करके जो है ना अब एक नया रहनुमा चुन हम्म। लिया है। आपको मंजिल नहीं रहनुमाई चाहिए था, तो वो रहनुमा खत्म हुआ तो ये वाला आपने चुना, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है इस वक्त। एंड दैट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी कि अगर आप, एंड आई ट्राई टू एंगेज विद सम पीपल लाइक दैट एज वेल नाउ, राइट, इंक्रीजिंगली सेइंग कि don't think about the vessel that's going to get you there. Think about where do you want to be, as what's your vision of Pakistan, and then if you work your way backward from there, then this entire cast of characters across the spectrum हम्म। won't be people you are a fan of or believe in or look up to, quote unquote. इसमें दो चीजें, एक जो साइकी की बात है, समटाइम्स लुकिंग एट द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग shows you what you can be as well, right? Recently मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि एक स्टूपिड फोन गेम से मुझे एडिक्शन हो गई थी, तो आई वाज वाचिंग समथिंग एल्स ऑन एडिक्शन एंड आई एम लाइक, ओ दिस इज गिविंग मी द सेंस ऑफ कंट्रोल की छोटे छोटे सिम्स को जो मैं सारा दिन, कौन सी गेम? यार वो आई डोंट वांट टू गिव इट शाउट आउट, रैंडम ये सिम्स टाइप की गेम है कि आप शहर Okay. बना रहे होते हैं, उधर स्टॉर्म भी आ जाता है, आपको उनको फार्म करवाना होता है, and I'm like, oh, this is what's happening. Eventually, it'll become something else. So I had to see some documentary on addiction to realize that. When you look at these UK Pakistanis, those Shayan Ali gang, कि आप गाड़ियों के पीछे भाग रहे हो, आप उनको बुरा भला कह रहे हो, ये कौन लोग हैं? ये कुछ सेकंड जनरेशन यूके पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने कुछ नहीं अचीव किया वहां पर, जिनको प्रॉब्लली वहां पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, जिनकी कोई ज्यादा दोस्ती नहीं होगी। देर द रीजन दे found love and acceptance and popularity for the first time in their lives is because they're Imran Khan supporters. So every single day they try and go even more insane. शयान अली की पूरी पर्सनैलिटी क्या है? ये 19-20 साल का बच्चा है जो नवाज शरीफ के घर के बाहर गालियां देता है। तो 10-15 साल बाद ये जब देखेगा कि मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी पॉपुलैरिटी की वजह ये है, बट देन यू शुड थिंक कि इसके बगैर इनकी जिंदगी क्या थी। सो फॉर अ लॉट ऑफ द कंट्री who's felt shat upon, उस फेल्ट लाइक इंडिया जिनसे हम अपने आप को इक्वल समझते थे, बेहतर समझते थे, वो हमसे आगे निकल गया। हमें बताया गया था मुसलमान अशरफुल मखलूकात हैं, हम सब इंसान हैं वैसे तो, बट मुसलमान सबसे ऊपर होंगे, वो भी पूरी दुनिया में हम बॉम्ब हो रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका आता है हमें जलील करता है, रेमंड डेविस हमारी सड़कों पे आता है मार के चला जाता है, अमेरिका आता है ड्रोन मार के चला जाता है। फिर एक आदमी खड़ा है कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ चले तो ऐसा लगे डोनाल्ड ट्रंप साइड कैरेक्टर है। तो सडनली मैं जो सिर्फ आईने में देखता था तो एक लूजर देखता था, जब मैं अपने आप को आईने में इमरान खान का मास्क लगा कर देखता हूँ, these all these people या like उसने गोरे parliamentarians, गोरे को इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोल दिया, राइट? absolutely why am I putting that sticker at the back of the car? तो जो एक इनहेरेंट पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, हमें अपने आप से नफरत है। मुझे सिंधी होने पे नफरत होगी, मुझे पश्तून होने पे नफरत होगी, मुझे बलोच होने पे नफरत होगी, मुझे जुबान से नफरत होगी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं हर जगह जलील होऊंगा, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे स्टंटेड हैं। वर्ल्ड पावर दुनिया नंबर वन, इस बंदे ने आके एब्सोल्युटली नॉट बोला, ट्रम्प के साथ फुल छाती खड़े होके खड़ा हुआ, यूएन में यूं जाके खड़ा हुआ। सडनली आई फील लाइक आई एम स्टैंडिंग देयर।
And that's the feeling Imran Khan gave me when he lifted that World Cup in 92 as well. So for 30, 40 years, this man has made me feel like $1 million. तो मैं तो दे दूंगा ना इस बंदे को जान, बिकॉज वो शटर आइलैंड के एंड पे भी जिस तरह बोलता है, आई वुड रादर डाई हीरो. आई वांट टू बिलीव इन द मिथ ऑफ इमरान खान बिकॉज आई लाइक माई सेल्फ बेटर, आई लाइक द वर्ल्ड बेटर, आई लाइक द कंट्री बेटर इन बिलीविंग दिस मिथ ऑफ इमरान खान के हाँ ये वही है जो मैं अपने जहन में बनाया हुआ है. दैट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. तो क्यों नहीं करेंगे. मैंने आई थिंक जो Yeah. नॉन यूथीय थे उनको स्पीच से कन्वर्ट कर दिया था, लाइक ये सही बोल रहा है, इससे ज्यादा खुश जिंदगी है. I mean, it's interesting to bring it back to where we started this conversation, right? This is the same phenomenon with core ट्रम्प. MAGA. या Yeah, या. MAGA is exactly that. Apprentice का host, successful businessman, उसकी एक personality है, larger than life character. WWE में हमने उसको देखा है, मिस मैकमैन के साथ फड्डे करते हुए. ऑल दिस, हम सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ. जो ये इट्स प्रॉब्लमैटिक अवाम है ना, वो नहीं समझती कि भाई ये चीजें अपील करती हैं. ट्रम्प का पॉर्न स्टार्स औरतों के साथ जाना, जो मर्जी है औरत उसको ग्रैब कर लेना, ये एक पॉजिटिव है फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. एज अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, इट्स द सेम विद खान. This idea that he could get any woman in the world, and Yeah. he did So for a that's long while, a is aspirational. Yeah, no, and I was like, this is have you seen Mr. I think I've asked you this privately. Have you seen Mr. McMahon on Netflix? या फिर हम. या मैं फिनोमिनल राइट, तो मैंने वो देखी और उसके बाद मेरी किसी से बात हो रही थी. तो मैं उसको ये कह रहा था कि यार मैं वो देख रहा था डॉक्यूमेंट्री पूरी, और फिर एक दो दिन मैंने जो है ना वॉक्स पे और सोचा उसके बारे में ना कि क्या ये फिनोमिनन था, और इट वाज ब्यूटीफुली डन, सो इट मेक्स यू थिंक अ लॉट. बिकॉज आई थिंक यू आल्सो, वी ग्रू अप एज WWF एंड या ऑफ WWE कोर्स. फैंस, राइट? तो अब मैं वो देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार हमने 13-14 साल की उम्र में क्या क्या गलाजत कंज्यूम की, right? Or some of us, I would argue, like over time evolved to sort of get rid of, delete that. Hassan Minhaj talks about, right? कुछ चीजें आप delete करते हैं अपनी जिंदगी में, उसने stand up में भी अपनी बात की. वो deleted that. But then I was thinking कि now that I look at that cohort, like अगर आप 15 साल के थे या 10 साल के थे या 20 साल के थे और आप उस यूनिवर्स में जो है बड़े हुए, like we did, or even before that, and I look at like men in particular in America, right? The idea of toxic masculinity and Donald Trump and all, like, makes sense. Like ये जो सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है, when you watch WWE as a phenomenon or as a exhibit A of what happened culturally, I'm like, okay, a lot of the MAGA movement makes a lot of sense to me now in terms of where things went wrong with an entire generation of primarily men, because they were, as they explain, right, targeting young men, teenagers in that universe at that period of time with some of the most insane stuff that I'm like, holy shit, like I can't believe I grew up watching that. हाँ वो सिम्बियोटिक हो जाता है ना. आर दे मेकिंग द कल्चर और इज द कल्चर मेकिंग WWE? आर दे रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट एग्जिस्ट? अगर एंटी मुस्लिम हेट है तो वो एक आयरन शेख बना देंगे कि दो आयरन शेख को तुम लोग गालियां. वो सार्जेंट स्लॉटर बना देंगे अगर इराक वॉर हो रही है. Yeah. बट बाय डूइंग दैट आर दे एक्टिवली shaping opinion about the Iraq war? Maybe not so much. It's Probably not shaping, right? yeah, But they're reinforcing, right? This was like, yeah, again, going back to the MSG event, right? It's not so much as that set about Puerto Ricans, etc. It's that context, right? It is yeah, all being said in the context of an entire campaign, which starts in 2016 from the Golden Escalator, that they're rapists. And that's it's amplifying, it's reinforcing, it's giving more fuel to what already exists, as opposed to, in my mind, right, if you're a leader, if you are aspiring to be in a position of influence, your goal ought to be to help calm down some of the worst instincts of humanity, as opposed to give it more flame. But again, we are living in an era of social media and eyeball, yeah. the tyranny of the eyeball, um, where it's hard to do that and easier to feed feed the beast. And it's only going to get worse, right? With social media, uh, some Mexicans are bad people is not a headline. They're Exactly. sending rapists
they're eating your pets. They're तो eating अगर my cat आपने, and my dog. एंड ये मैं भी इसमें फीड कर चुका हूँ खुद ही, एज मच एज आई रिकग्नाइज इट। जिस चीज की रोज आप बात करते रहते हैं ना, वो चीज वैसे ही बड़ी होती रहती है। तो आप तारीफ करें बुराई करें, इन मेनी वेज आई हैव हेल्प्ड इमरान खान्स पॉपुलैरिटी बाय टॉकिंग अबाउट हिम कॉन्स्टेंटली। हाउ कैन यू नॉट? They make sure there's a news headline every single day for good or bad reasons. They will find a way to be the news headline every day. Trump will find a way to be the news headline every day. By the way, जो रोगन के साथ देखा ट्रम्प? Not yet. It's on my weekend देखा क्या list. तुमने? मैंने भी शुरू किया है। तीन अभी तीन घंटे की है यार, अल्लाह माफ करे, इतना टाइम कहाँ वो से, टू जितना एक्स पे मैंने सुननी देखा है ना, पड़ेगी। if it's somehow just, I think it'll be the most American thing if the host of Fear Factor swings in American elections, which decides what America will become. I can't imagine anything more American than that if they would I think did it has that like while what eating 50 an million views already American or bacon. something like that. यार मैं थोड़ा सा ही देखा, बट ऑलरेडी आई वाज लाइक कोलबेर, किमिल, ऑलिवर, यू गाइस हैव मैसिवली फेल्ड। क्योंकि मैं तो इतना Yeah. नहीं क्लोजली फॉलो करता, बट वो जो कैरी कैचर ट्रम्प का बनाया हुआ था, dude, he comes off as the most normal, he comes off completely intelligent। वो जो एक unintelligible आप फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ करते थे कि बाइडेन ट्रम्प दोनों की मेंटल कंडीशन तबाह है, none of that। If still the top American criteria is can you have a beer with him? Absolutely, absolutely you can have a beer with Donald Trump। तो हो सकता है जो रोगन, the host of Fear Factor, a UFC commentator, has just decided probably the most important American election in history. What's more America than that? Yeah, yeah. What's more America than I that? mean, and again, like if you were to link that to the global phenomenon, right? We talked about this. It's been written about in the Indian election context as well. It was the influencer election. It was a YouTube election. The last one was the WhatsApp election. The one before that was the Facebook election. So that's where we are. It is about the podcaster hosting Donald Mm. Trump and having a 3 hour conversation and being like, yo, here's, I'm a normal dude. 2000, आप कह रहे हैं 2028 का इलेक्शन मैं डिसाइड करूंगा, आप ये कह रहे 2028 का इलेक्शन आप डिसाइड करेंगे, एक तरफ पाकिस्तान में और दूसरी तरफ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद आपके हैं? ऑटोमेटेड शहजाद की पॉडकास्ट को जो है वो, आई डोंट नो इफ यू मैं ट्राइड दिस बाय द वे, द नहीं, नोटबुक एलएम टूल ऑन गूगल। मैंने अपनी जिंदगी में चैट जीपीटी नहीं ट्राई किया अब तक यार। मेरा भी यार हर शहजाद, यू गॉटा ट्राई नोटबुक एलएम। उसका एक आई थिंक मेटा ने भी लॉन्च किया है कॉपी कैट प्रोडक्ट। उस पे ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स लोड करें on any research topic, right? So when you make your video on, let's say you made it on Justice Issa's legacy, right, which was fantastic, by the way. I'm almost done, so थैंक यू, that's why I didn't message you. I'm like 80% of the way through. थैंक यू, बहुत गालियां उसके पड़ी अंदर उस पे, when you बहुत गालियां पड़ी। नहीं, उसमें when you make that point about his point on sort of the use of words evil, etc., right, about politicians, that was very, very good that you called that out. But so you do this research for your podcast, right? उसके अंदर नोटबुक एलएम क्या करता है कि आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर में डालें, it'll help you research through that in any case, but more importantly, through those documents, if you give it prompts, it can create a two-way podcast conversation the way we're having it on that topic. It's like wired. You should check it out. Like it's तो insane. So 2028 point was that it could actually be AI bots मुझे influencing जो लोग एआई debate. रेगुलरली यूज करते हैं उनको मैं इडियट साउंड करूंगा, बट मेरा दोस्त है अब्दुल अहद अयूब, उस दिन आया हुआ था, ही हैज द $20 वाला चैट जीपीटी, Hmm. एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज चैट जीपीटी लाइक बकवास मत कर, लंबी मत कर, एंड चैट जीपीटी अंडरस्टूड लंबी मत कर, लाइक ही Yeah. सेड लंबी मत कर, एंड चैट जीपीटी गेव लाइक अ शॉर्टर। आई वाज लाइक व्हाट, Yeah. व्हाई वुड ही नो लंबी मत कर? तो उसमें वो भी अच्छा था, लाइक इट्स आल्सो इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो Yeah. आई वाज लाइक यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आप अगर मेरी पॉडकास्ट में एआई को दे दूं, वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस में पाकिस्तान में हम लॉन्च कर Yeah. दें। So I met this guy. He's sort of has a media startup. I'll try to see if I can connect you offline with him. He was telling me this.
His team over the last 18 months runs a diaspora, non-Pakistani diaspora channel. So I think it's linked to the Middle East. So he said his whole media team that sort of packages the content, uploads it, edits it, makes clips, creates blogs, etc., has gone from like 30, 40 people to less than 10 now because of AI. Just because it's all automated. Everything from the subtitles, captions, to the editing, to the summarization of the transcript into a punchy blog post. All of that is mostly automated now, and there's human review and approval. That's it. It's pretty Oh, crazy. yeah, we will be jobless. No, Jobless. it's actually, I mean, actually not, right? Like, if you think about it from the point of view of like you and what you do and what you've been doing, right? A part of the barrier to growth from the Pakistan experience being everywhere is the fact that you would need to hire a lot more people, which obviously not there, right? And economically, is a different conversation. But if AI goes to the next level as it is already, then all of a sudden Shehzad Yas can churn out a lot more content from one podcast as two or three people working in the back end as opposed to requiring 30 right now, which is a huge opportunity. आई थिंक लैंग्वेज अब तक इतना अच्छा तो नहीं हुआ. लाइक हो कैन आई जाएगा, गिव, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ. अगर मैं उर्दू उर्दू की अपनी उर्दू पूरी बेहतर है. पॉडकास्ट. ट्राई करो, उर्दू बेहतर है. Low resource languages, as they refer to them, are still problematic. I think their meta is ahead on some of them just because of the Facebook data set that they have. OpenAI, not so much, but I think Urdu is still pretty much up there. उजैर, जाते जाते मैं आपको बस एक अंकल वाली एक आइडिया दे दूं. मैं भी आजकल बहुत लड़ रहा हूँ लोगों से. फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि यार मतलब सब हमारी तरह फारिग नहीं है. तो अंकल के लिए अगर मैं आपके लिए थोड़ी एम्पथी दूं, आई थिंक पीपल आर ट्यून्ड इन एज मच एज वी आर. द फैक्ट दैट वी कंज्यूम सो मच, oftentimes people's views seem idiotic to us. We're like, how did you miss this? How did you miss this? Why are you repeating this when this has been proven false so many times? बट आई थिंक लोग बिजी हैं. अगर आप डॉक्टर हैं, आप सारा दिन 18-18 घंटे की शिफ्टें लगा रहे हैं, उसके बाद जाकर एक मोहित पीरजादा का व्लॉग देख लेते हैं और आपको लगता है वही सच है, और वही पर्सपेक्टिव आप रिपीट करते रहते हैं. सो मे बी दैट्स वेयर देयर कमिंग फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाई दे थिंक कि Fair. ये ऑल्टरनेट रियलिटी में उज़ैर और शहजाद रह रहे हैं. That's a fair point. And I've started doing more and more of that, like checking myself. And I think there's also research that's like when you confront, like it's a very rational thing to do, right? कि अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हैं तो आप काउंटर फैक्चुअल दें तो आपको लगता है कि that will convince them because your fact is a fact and theirs isn't, right? That's the point of view. But in fact, a lot of times actually makes people more anchored in their view Yeah. when you rebut them with another fact. And so I've started doing more and more of that. And like the goal also is कि okay, आपका एक particular perspective है. The place where I still trip up is this insistence, right? Whether you're a doctor or an engineer, etc. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा भाई साइकाइट्रिस्ट है, मेरी हम्म. बहन साइकाइट्रिस्ट है, राइट? अब अगर मैं उसको फोन करके बोलूँ कि हाँ हाँ. सनाबाजी मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन का असल एडवाइस देता हूँ, तो वो मुझे कहेगी यू आर चुप कर बीइंग बे. टू क्रिटिकल तुझे ऑन क्या कैंसर पेशेंट्स. तुझे क्या पता, ठीक है हाँ. ना? और उसी तरह लाइक माय व्यू इज you're a doctor and you may be amazing as a gastroenterologist or whatever heart surgeon, but you're not in the political science domain or the public policy domain. So treat us with the same, नहीं नहीं. respect that you क्रिकेट expect us to treat you as a professional, quote unquote. क्रिकेट और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सबको आते हैं. ये तो यूनुस खान ने बड़ी टेलिंग बात की. उसने बोला मैं जब टमाटर लेने जाता हूँ तो टमाटर वाले को भी मेरे से बेहतर क्रिकेट पता है. मैं जब रिक्शे में आता हूँ रिक्शे कवर वाले को भी ड्राइव मेरे ऐसे से. मारते हैं, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है. तो द अगर तो ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट अगर तो फोर्थ कोई इनिंग्स टेस्ट प्लेयर टू हैव एवर लिव्ड अगर इज कोई गेटिंग एडवाइस पाकिस्तानी ऑन बैटिंग. यूनुस खान को कवर ड्राइव मारना सिखा रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है. डनिंग क्रूगर Yeah, इफेक्ट मेरे ख्याल से बहुत पाकिस्तान में yeah, लोग yeah, you covered that as well. सफर करते हैं But उससे. बट इन माई प्राइवेट लाइफ ऑनेस्टली आई बिकम वर्स. अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया एंड आई वाज लाइक, who gave you access? Like, do you think I have time to do homework? They're like, no, no, I wanted your. I was like, I don't have time to do homework for you. जाकर पढ़ लो. नहीं, आप मुझे क्यों मैं बताऊं भाई तुम्हें?
तो अब Yeah. मुझे पर्सनल लाइफ में कोई अगर आकर एंगेज करने की कोशिश करता है, या अनसोलिसिटेड व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आइदर आई ब्लॉक और आइदर आई टेल देम स्ट्रेट अप कि यार मतलब, आई डोंट नो इफ द किड्स आर स्टिल सेइंग इट, बट आई डोंट हैव स्पून्स फॉर दिस। That's fair. That's a good one. I mean, my filter on that is I'm a bit ageist on that. So if it's somebody younger who's reaching out, I'm much more open to engaging than somebody older. Just because I'm like, yeah, you're still. I personally in my mind somehow feel कि अगर आप 22 साल के हैं और आप बड़े passionate हैं इस टॉपिक के बारे में, तो शायद हम एक अच्छी तरफ जा सकें जर्नी के अंदर। आजकल मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ तो मैं इसलिए तुम्हें अपनी डीसी आने की इंटरेक्शन, जरूरत है इलेक्शन के बाद। मुझे कहीं ना कहीं एक वेकेशन की अशद जरूरत है, मे बी आई जस्ट नीड टू काम डाउन। लेट्स सी, अगर ट्रम्प के आने के बाद मैं डीसी आ भी सकता हूँ, बट दिस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। अमेरिका टूर इज हैपनिंग, सो हम फिर डीसी में बैठकर ये करेंगे। और इलेक्शन से पहले जब लेम डक पीरियड होगा और आप अगर चक्कर लगाएं, तो फिर हम सामने बैठकर भी प्रिडिक्ट तो करो यार, तुम इंडियन इलेक्शंस के एम्बैरेसमेंट के बाद अब सो बहुत हाँ, सेफ नहीं खेल नहीं, रहे हो। मैं प्रिडिक्ट अभी भी नहीं सेफ नहीं, कोई खेल रहे सेफ हो। नहीं। आई थिंक इट्स गोना ब्रेक फॉर कामला ऑन वेंसडे और लेट आई ट्यूसडे थिंक नाइट, नॉट वेंसडे। शी इज गोना विन। आई थिंक अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की वन ऑफ अस इज बार। गोना बी रॉन्ग, सो विल सी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बीइंग हमारा तो रॉन्ग अगेन, प्रोफेशनली बट काम है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा मैं फोरकास्टिंग में नहीं हूँ भाई। मैं तो बट बिल आपने स्टाइन प्रेसिडेंसी प्रिडिक्शन बोल दूं, मांगी मुझे है। क्या ही फर्क हाँ, पड़ेगा क्या यार। फर्क पड़ेगा। ये क्लिप अब जाएगी, उजैर ने कहा कामला हैरिस जीत रही है। हाँ भी, मैंने कहा जीत रही है, मुझे लग रहा हाँ, आप जो 400 पार मोदी को करवा रहे थे ना उसके है। बाद दिस विल बी योर्स। फिर हमारी एक पॉडकास्ट आएगी, व्हाट डिड उज़ैर मिस। हाँ। ठीक है, थैंक चलो। यू, थैंक्स मैन, टेक केयर, थैंक यू खुदा एवरीबॉडी फॉर हाफिज। लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।